Hello and welcome to the stream, guys. thank you so thank you so much once again for joining in for another round of Control Ultimate Edition. तो हम लोग काफ़ी नियर आ चुके हैं अभी एंड के एंड इनफैक्ट हम बहुत ही जल्द हमारा एलन वेक वाला एक्सपेंशन भी खेलेंगे उसी के साथ ही। तो शायद कल तक हमारा सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग पूरा कंट्रोल एंड एलन वेक का कनेक्शन क्या है, कैसे क्या बैठ रहा है, वो सब पूरा हम लोग इसमें देख पाएंगे अगर आज हो जाता तो आज। बट जो फाइट्स हो रहे हैं वो बहुत टफ होते जा रहे हैं। एक वो काइंड ऑफ साइड मिशन था वो जूक बॉक्स वाला, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। कल मुझे तो 3-4 बार मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर रात को मैंने एक बार ट्राई किया, तब जाके वो कंप्लीट हुआ। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है फाइट्स, इतना इजी नहीं होता। वो जूक बॉक्स वाला इसलिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज उसमें वो एनिमी की एचपी आई थिंक थोड़ी ज़्यादा रहती है नॉर्मल एनिमीज़ के मुकाबले, या फिर सबसे हाईएस्ट लेवल के जो एनिमीज़ रहते हैं वो रहते हैं जल्दी से मरते नहीं है। और एक डिसएडवांटेज भी उसमें देते हैं कि तुम्हारा वेपन डैमेज कम होगा, या तुम्हारे लॉन्च वाले एबिलिटीज़ का डैमेज कम होगा, या फिर एनिमी की एचपी 100% ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर उसकी 100 ऑलरेडी है तो 200 हो जाएगी। ऐसे करके अलग अलग डिसएडवांटेज उसमें देते हैं। और वो सिर्फ पहला लेवल ही था जो कि मर मर के मैंने ऑफ स्ट्रीम फिर एक बार में ख़त्म किया था, क्योंकि इतने बार मैं ऑन स्ट्रीम 3-4 बार खेल चुका था, तो मुझे पता चल गया था। बाकी और भी 2 लेवल्स रहेंगे, तो वो मैं तो स्ट्रीम पे तो अटेम्प्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो चैट देखना है या कुछ। वैसे तो उतने चैट्स नहीं आते, फिर भी अगर चैट आते भी है तो मतलब देखना पड़ता है एटलीस्ट है कि नहीं है। वो इसकी बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मिशन की। तो अगर कोई खेलेगा बाद में फ्यूचर में तो ध्यान रखना, ये वाले बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। पहला वाला ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, इसके बाद ये दूसरा रहेगा जिसमें 3 जुक बॉक्स टोकन डाल के फिर वो कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीडिशन दैट ग्रांट्स एब्सोल्यूट रिवॉर्ड्स, और कुछ आई थिंक कॉस्ट्यूम भी मिलने वाला है। वो अपने हिसाब से ऑफ स्ट्रीम में खेलूँगा। वो मैं अपना पनिशमेंट यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे भी लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आ रहा होगा। बट मैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ उसके चक्कर में, क्योंकि इतना बढ़िया गेम है और मिस्ट्री है जो कि जानना ज़रूरी है। फ्यूचर में या कभी तो कभी ना कभी तो खेलोगे शायद। और क्या, इधर मैं कैसे जाऊंगा? पेट सेंट्रल रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च से ही चलते हैं। एनीवे शायद, जय हिंद, वेलकम टू स्ट्रीम। ईट रॉ तुलसी लीव्स इन अर्ली मॉर्निंग टू गेट रेड ऑफ दिस कफ। नहीं खेलूंगा। ओके। एस्ट्रल मिरर टेस्टिंग एक्टिव, सेंट्रल रिसर्च ही चलता हूँ, वहाँ से सब कुछ सब जगह जा सकते हैं अलग अलग एरियाज में। चलो, तुलसी यूजुअली ऐसे कच्चा खाने नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं कुछ आ, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि इट कैन हार्म योर बॉडी। उसके एक्सट्रैक्ट्स वगैरह है, जैसे वो दांत से चबाने नहीं चाहिए, वो बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ लाइट जलाना है? क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाइट जलाने का काम करना है? ये क्या है? हाथी, बिल्ली, फ्लावर, बल्ब, मैग्नेट, मच्छी। अच्छा, ये कुछ पजल वजल है क्या? लकी आइटम मैनिफेस्ट, फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल, लकी आइटम मैनिफेस्ट। ब्रॉन्ज कोई फिश, चाइना, अट्रैक्ट्स अबंडेंस एंड वेल्थ, फॉन्ग शुई। हॉर्शू आइलैंड, वार्ड्स ऑफ इविल, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट, हील्स अप, allows luck to be kept, heals down, luck flows outward. अच्छा। मैनेकोन मानेकी नेको, जापान, beckoning cat used in shops, paw held up to beckon customers, creating luck for the business owner. Four leaf clover island, shamrock, rare plant variation,
Connections to druidic healing rituals, elephant china, protection, good luck, wisdom, feng shui, light bulb, various documented gambling rituals indicate luck is produced when all lights in the room are turned on. Note: effects of items to be tested. Consider investigating the orientation of horseshoe. Also consider positioning of feng shui objects. Proximity of luck items may influence luck readings. For more information, अच्छा वो luck वाला सीन, जैसे वो कौन सा था, वो कैरेक्टर था ना डेडपूल 2 में ही तो था, लक को बांधती थी का मतलब लक उसका सुपर पावर रहता था। ये क्या है, 7 है क्या? एलिफेंट और बिल्ली वाला इनको पता नहीं है, और हॉर्सशू वाला ऊपर रहना चाहिए। लाइट सारे जलाने हैं, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। आर्यन हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम, कैसे हो? एपेक्स में रैंक पुश करने वाले हो, अब किल्स करने से वो किल पॉइंट्स भी अच्छे खासे प्लस हो रहे हैं। ठीक है, फिर ट्राई करता हूँ, इसके बाद खेलूंगा मैं एपेक्स। ये ऊपर रहना चाहिए तो बोला था ना, हाँ ये ऊपर ही है। हाथी वाला क्या है? ये हाथी नया देख रहा हूँ मैं। अच्छा, हाथी को इंटरेक्शन का नहीं है, उसके साइड में दिया हुआ है। मैं रिकवर हो रहा हूँ आर्यन थोड़ा, बट पहले से काफ़ी बेटर हो। पहले जो हालत थी उससे तो काफ़ी बेटर। छोड़ो, रहने देते हैं ये वाला, बाद में करता हूँ इसको। अगर कुछ इसका कोई ईस्टर एग वगैरह रहेगा तो बाद में देख लेता हूँ। अभी मुझे कहाँ जाना है? रिसर्च एस्ट्रेमेज। हाँ, एस्ट्रेमेज में बहुत खतरनाक वाला कुछ एक मिशन होने वाला है। अरे 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 अरे, और भी कोई आ रहा है? अरे कितने आएंगे? और भी आ रहे हैं? Mr. Animator, hello. Do you agree this society is biased to girls? Example, Amber Heard. It depends. It depends on the various contexts. I cannot just say it is just biased towards girls. That is a wrong approach to have. Yeah, there are many advantages that girls have. There are many advantages that boys also do have. You cannot ignore that fact. But it depends on the various contexts, that in which way are you saying. That matters a lot. यहाँ पे नहीं है रिसर्च एस्ट्रेमेज। अच्छा, मैं जा रहा हूँ उल्टी तरफ, वहाँ नहीं जाना है। Anyway, welcome to the stream. Madam Web being absolute dog shit, even Morbius से भी घटिया। अब पहले रिव्यूज थोड़े, वो शायद पेड रिव्यूज रहेंगे, पहले रिव्यूज थोड़े आ रहे थे, हाँ अच्छा है ठीक है,
इट इज़ नॉट दैट बैड करके आ रहे थे, बट उसके बाद रिव्यूज़ अभी वर्स से वर्स होते जा रहे हैं। रिसर्च यहाँ पे कुछ है? इधर रेडियो है और कुछ। इनके ये मैप्स का ये बहुत बड़ा पंगा है, समझना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। कौन सी जगह से कैसे जाना है। अरे बाप रे, मैथ्यू पोरेटा फिट है भाई। एक मिनट ना, now what is that most important thing that he is trying to protect? मेजर टॉम जेन तो नहीं है, थॉमस जेन। ये एस्पेक्ट्स बहुत इसको जैसे थ्रिलर वाइब देती है। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? मिस्टीरियस वाइब, थ्रिलर टाइप वाइब्स। कौन कहाँ से मार रहा है? म्यूजिक तो चला दिया उन्होंने। गलत डायरेक्शन जा रहा हूँ। फायर ब्रेक मेस नहीं, यहाँ तो नहीं है। ओके चल लड़ ले भाई। डायमेंशनल रिसर्च, हाँ ये हो सकता है ना। हाँ 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 यही है। चलो इनको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। फाइनली मिल गया। Agreed, bro. Just to tell you, I am from UK. Completed my final year, bro. After seeing Suicide Squad kill the Justice League and Marvel Spider-Man, I can say DC is failing games, and Marvel is rising in games because Marvel is going to make good games. Bro, how can they say Marvel animation sucks when they made good animation such as Spectacular Spider-Man Into the Spider-Verse? But that is not exactly Marvel's Spider-Man. That is Sony Spider-Man. So
The animation part has been done by the Sony guys. Find Aati the janitor. How many dead ends can this place have? We need to find Aati. What the hell? Okay, what do I need to do? अच्छा, I need to go to janitor's office. Okay. मैं यहाँ पे ढूंढने जा रहा था. Maintenance. Maintenance energy converters. I think that is the way to go. Guys, those who have joined in, welcome to the stream. Make sure to hit the like button, and if you're new to the channel, make sure to subscribe as well. Okay, let's see. I went into the wrong one. Ventilation. This should be the one. The finals from yesterday broken बन चुका है. People are keeping disconnecting ranked में एक मैच में 8 टीम्स एक साथ खेल रहे. क्या बात कर रहे हो? How? 8 टीम्स. क्या बात कर रहे हो? Reload efficiency. ये एलन वेक वाला मिशन है, डार्क प्लेस. मल्टीमीडिया में ये वाला देख लिया था. हाँ. Anyway, nothing else here. Let's move on to. I guess I just take a seat. What a mess. Take a break. No Aati. Where is he? This is what being a janitor is all about. क्या सो जाएगी क्या? या नींद में जाएगी? हाँ, मेरे साथ ही वैसे 2 बार हुआ. I suppose the janitor's assistant does need proper janitor attire.
क्या? What was the mission? अरे भाई जस्ट एक ड्रेस, हेडशॉट बूस्ट, क्या मिशन था? ठीक है, गन्स वगैरह तो निकाल सकते हैं। दीज 2 मिशंस ओनली ना, ठीक है चलो। Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on holiday. क्या बात कर रहा हूँ? Lomin Lomps, holiday homes. The sauna is warm, the beer is cold, and the kosu is in ice. आती या एलन वेक 2 में ऐसा एक बुढ़ा कैरेक्टर मिलता तो है, मतलब ऐसा एक कैरेक्टर जो हमेशा टॉवल में घूमता रहता है। आती मिलता है, आती लेकिन जेनेटर के ड्रेस में ही रहता है वो। I can't go there. Okay. ऐसे जाना नहीं देगा। इधर भी नहीं जाने दे रहा। ओके collectibles. Furnace complaint. The furnace, why aren't we allowed to burn outdated paperwork in it? Seems like a waste of a perfectly good fire. I am just trying to save you a few bucks and a lot of sweat. Usually people in suits appreciate that, right? What is the furnace even heating and who's in charge of it anyway? It's always lit, but I never see anyone tending to it, and the noise it makes, isn't it a little, I don't know, off? I mean, I can't be the only one who hears that weird wheezing or whatever it is. Someone should take a look. Okay. एबिलिटीज 4 है मेरे पास। डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट गेम। बंदे ज़्यादातर पबजी खेलते रहते हैं, नए प्लेयर्स आ नहीं रहे, ओल्ड वाले निकल जा रहे हैं। अभी वो मार्केटिंग करेंगे तो शायद उससे कुछ चेंज हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। पब्स खेल रहे हैं मतलब फन तो आ रहा है ना, मतलब मज़ा तो आ रहा है।
जाके लड़ लो भाई उससे। तुम भाई उससे लड़ लो। ओए ये कहां से आ गए? पीछे अचानक से आ गए, पता भी नहीं चला इनका। हेल्थ मेरा फुल हो गया ना। ये है क्या? Ocean View Motel and Casino entry point. Utuista hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri. Oi, oi, oi. 5–12, noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa. Sekunnissa yöllä tuuli väliaikaisesti pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. तीसरा दरवाजा खुला। Säärannikko asettuu tänään kello 16 astetta. Tuulta, sukuja, näkyvyys yli 20 kilometriä. ये चला गया लगता है। Selkeää yli 20. Helsingin Karajuo 18, Etelä-Karhu 4, yli 20. Russadön 18, Tyyntä, Pilvistä, yli 20. Prisma 16, हाँ ये वाला है। 5, Vuoripilvistä. ये ऑर्डिनेट डम साइड पे तो नहीं भेज रहा मुझे? फाइट होने वाला लग रहा है मेरे को। ब्लैक रॉक क्वारी के यहाँ पे हो। हाँ इधर होगा तगड़ा फाइट। ऑलरेडी ये कुछ दिखा रहा है। थोड़ा स्टैटिक है ये वाला, रात का विजन एंड ऑल। एनीवे गलती से फाइट चालू हो जाए उससे पहले मैं ये क्लेम कर लूँ। इनविंसिबल पार्ट 2 फ्रॉम मार्च, कल ट्रेलर आया, क्रेजी होने वाला है। मोर गोर सीजन 2 पार्ट 2। अच्छा मैंने अभी तक सीजन 2 शुरू नहीं किया, मैं भूल भी गया था। वैसे करना है उसको चालू करना है करके मैं भूल ही गया। वो उसका एक सिंगल एपिसोड भी आया था सीजन 1 एंड 2 के बीच में, वो भी नहीं देखा मैंने। वो जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है शायद, भूल भी गया।
मेंटेनेंस रेस्ट्रिक्ट एरिया, अच्छा यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्या डायरेक्टली? हाँ, मुझे ये ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैप में अगर देखें तो ये पूरा ऐसे जाके उधर एक लिफ्ट है, लिफ्ट पे जाना पड़ेगा। चलो, लेविटेशन ने ये वाला पार्ट तो काफ़ी इजी करवा दिया। इसको बुलाना है ना, नीचे कैसे बुलाओ? नीचे बुलाना है या मुझे नीचे जाना है? रेस्ट्रिक्टेड एरिया चला गया। ये सही है, लेविटेशन ने बहुत इजी मेरा काम कर दिया। यहाँ पे इधर कुछ है तो नहीं? क्या बात करो, इतना पूरा घूम के जा सकता है? लेविटेशन एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेता, ये बहुत सही लगा, बट बहुत ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देगा। वो रुकाना है तो फिर उसके लिए उसके स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फिर। एक ही था बंदा। Season 2 Part 2. A response team was dispatched to a possible AWA in progress at Albany. At the scene, the team encountered and retrieved AI 63, altered item 63. The Bureau had discovered numerous online message boards regarding loud noises coming from an abandoned shipping warehouse. This, along with the noises, were considered to be evidence of a werewolf due to the fact that they only occurred on the last 3 full moons. Field agent accompanied a squad of ranger trainees to the site as a form of field training. The likelihood of a genuine AWE was considered low. Despite this evaluation, the team encountered a highly volatile altered item which they successfully retrieved. ये तो अपना वो एजेंट अरीश वो ये किया था, वो अपने बंदों के साथ लेके आया था। Upon arrival, the squad broke into the warehouse and discovered boxes of undelivered merchandise abandoned by the previous owner of the warehouse. As they investigated the noise along the south side of the building caused it to collapse inward. Wooden crates in accelerated physical from injured field agent to trainees unconscious. The others escaped the warehouse before it collapsed. Entirely in the rubble, they found AI-63 at the origin of the dash, attracting and repelling debris. They stood guard around the item until the moon set, at which point the altered effect ceased. They returned the item to the Bureau without further incident. No fatalities occurred. The collapse of the warehouse was not witnessed by civilians and thus no re-informing by the company. Okay. ये ज्यूक बॉक्स की बात कर रहा है, शायद ज्यूक बॉक्स वाला ही तो था सीन। क्या चीज़ है? यहाँ से तो मैं आया ही। जाना कहाँ है?
अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बटन दबाना भूल गया था मैं। कोई स्पॉन हो गए? खत्म हुआ ना? हाँ खत्म हो गया। लेविटेशन, इवेसिव डैश। लेविटेशन भी बहुत काम में आता है ना, तो उधर आजू बाजू में कौन सा क्या है, कैसे जाना है। इट गिव्स मी अ टॉप डाउन अप्रोच। दोनों का कॉम्बिनेशन सही है, दोनों ही दिया उन्होंने। कोई एक भी दे सकते थे, सिर्फ लेविटेशन दे सकते थे या सिर्फ डैश दे सकते थे। डैश तो ऑलरेडी बहुत सारे गेम्स में देते ही हैं। डॉज बोल दिया या डैश बोल दिया। लेविटेशन के साथ तुम्हें डैश भी दे रहे हैं, ये सब डैश। ऐसा एक लेवल एलन वेक में भी था, केबल कार से जाना पड़ता, लास्ट में फिर ठुक जाता है, ऑलमोस्ट गिरने की हालत में रहता है, उस टाइप पे भागना पड़ता है। यहाँ पे लेविटेट नहीं कर सकते। कोई मुंह पे आ जाएगा तो वो लॉन्चर वाला मेरे को गन नहीं चलाना, नॉर्मल वाला ही गन चलाऊंगा। आती का सॉन्ग्स इसमें तो डाला हुआ था, बट इसमें एलन वेक में उन्होंने फुल ऑन दे दिया। फिर एलन वेक 2 में पूरा उसका एक यो तो नियो करके एक तो मूवी बनाया हुआ है, 20 मिनट का मूवी है, इन गेम हम लोग ने देखा भी था। और यो तो नियो का गाना भी है, और इतना सही लगता है ना सुनने को। पहले पहले उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्या गाना है। फिर थोड़ा सुना तो मतलब अच्छा लगा सुनने में। क्योंकि ऐसा गाना ज़्यादा सुनने की आदत नहीं रहती ना। रात को आराम से चिल करके सोते हुए सुनो और भी सही लगता है। चलो आ गए सर। वापस जाने वाला भी रहेगा कुछ। अनमैप्ड एरिया बंद हो गया। अभी आएंगे, फाइट्स तो होंगे तगड़े वाले। Do you see it?
कलेक्टिबल्स, प्लास्टिक ट्री सप्लीमेंट, ठीक है। ये क्या है? सैंकरिन टैंगो, हीरोज टैंगो, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? Samma på svenska. Hey, girl. What a fin. Holidays holy. परकेले, परकेले मीन्स कुछ इडियट विडियट वाला कुछ सीन है। ये क्या है? अच्छा, Adi? Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No. Bark don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. एबिलिटीज, हेल्थ एंड एनर्जी मैक्स आउट कर दिया है मैंने। लॉन्च 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए 8 चाहिए मुझे। मीली कम भी रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। While holding shield, use evade to rush at enemies and knock them back. Requires the evade ability. Evade ability तो है। 30% shield strength, ये एक रखता हूँ, ये भी काम में आएगा। Seizing additional enemy, स्लैम वाला ज़्यादा तो नहीं करता मैं। एबिलिटी लेविटेशन, लेविटेशन भी करनी है मैक्स आउट। बोर्ड काउंटर मेजर्स, इस एलिवेटेड रिसर्च में 6 और मारने। कंटेनमेंट तो ये अबैंडन कर देता हूँ। मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन, हेडशॉट टैक्टिक्स, इसमें किसी को अपग्रेड करना है क्या मुझे? शैटर, शैटर भी वैसे अपग्रेड करना बनता तो है। फिलहाल के लिए ग्रिप को कर देता हूँ अपग्रेड। शैटर का बाद में कर दूंगा। शैटर भी अच्छा खासा चल रहा है। मॉड्स वगैरह तो बोल रहे करके कोई मतलब नहीं है, मिलता रहता है और वो सही भी है। चलो ग्रिप को देता हूँ कुछ अच्छा वाला। एक्यूरेसी तो काम का नहीं है। ये देता हूँ हेडशॉट प्राइम वाला, ये सही रहेगा। कलेक्टिबल्स में क्या मिला है? हॉटलाइन, रैंक पुश, क्या डायमंड तक? डायमंड तक होगा क्या? एक बेटा रुक जाओ इसका। हाउस ग्रू देयर हियर एवरीवेयर, वी आर देयर एवरीवेयर, वी हैव अ सॉकेट डोर देयर, इट इज अ डायरेक्ट लिंक। You have seen the foundation base of the building tree. ये फाउंडेशन बेस है। जितने तक होगा अपने तो डायमंड तक पहुंच पाएंगे क्या?
स्क्वाड में वैसे बंदे मिल पाएंगे कि अब डायमंड तक पहुंच जाए? अनमैप्ड एरिया। काफी फैला हुआ बिजनेस है। एनीवे ये फास्ट ट्रैवल वाला ये चीज़ देखे इन्होंने बहुत सही काम किया है। वापस जाना है एस्ट्रेमिस। हाँ चलो एस्ट्रेमिस चलते हैं। रैंक पुश जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक करेंगे। डायमंड मास्टर से पहले आता है ना, मास्टर एपेक्स। अच्छा इसके लिए बोल रहे थे कि ये एस्ट्रेमेज वाला बहुत जबरदस्त लेवल होने वाला है। चार्ज के बजाय अगर मैं शटर लूँ तो शटर में मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। छोड़ा रहता है। अरे बाप रे बाप। ओह
क्या बात है। ओए! गाना बंद। और क्या मजा आ रहा था गाना सुनने में। एस्ट्रेन सिगरेट, बट उसके चक्कर में व्यूअरशिप की और लग जाएगी। किसके चक्कर में? एपेक्स के चक्कर में। वैसे भी व्यूअरशिप की लगी पड़ी है। व्यूअरशिप होना रहेगा बराबर, लोग जो अप्रिशिएट करेंगे वो बराबर आएंगे। मैं अगर हर समय व्यूअरशिप का देखते बैठूंगा फिर तो हो गया, ना गेमिंग सही से हो पाएगा, ना मैं एंजॉय कर पाऊंगा, ना लोग भी एंजॉय कर पाएंगे। लोगों को वो 2-4 दिन का मिलेगा, फिर बोलेंगे अरे क्या एक ही खेलते रहते हो, या वही व्यूअर्स के लिए खेलते रहते हो, खुद के लिए नहीं खेलते कुछ भी। द ऑब्जेक्ट इज अ steel ashtray with a maze engraved on its bottom. An ever-burning cigarette rests in it. When bound, the object allows para-utilitarians to create a maze of shifting corridors without adjusting the dimensions of the space around it. This maze forms wherever the object is placed. Only the binder can navigate the maze, though they may allow others through. The object is currently bound to directed trench. Okay. The object was discovered at Dash by a team of rangers sent to a care facility for the elderly that had become the center of numerous missing persons reports. Local authorities also disappeared inside after responding to reports. Agent Dash discovered the object in a dash, which indicates it was the source of the disappearances. The whereabouts of the missing persons are still unknown, though they are presumed to be lost in the maze. 8 मिनट का सॉन्ग है, टेक कंट्रोल, ओल्ड गॉड्स ऑफ एसगार्ड. That is nothing but Poets of the Fall. Awesome. That was awesome. Actual way. Projector. We used the slide projector. I led the expeditions into Slidescape 36. जिसकी वजह से ही हिस्स बाहर निकला है शायद. To go, the director should not put himself in danger. I told them to fuck off. I've seen action before, and I had to witness this myself. To find some meaning in all of this, I couldn't sit on my ass, alone with my thoughts, my memories, anything but that. Those who survived were deeply affected by what we found there, by what Darling brought back. It changed everything. Whether that's a good thing or a bad thing remains
remains to be seen. But I did find my meaning in that desert. A sound, like a needle drilling in, cutting through the containment suit, reverberating in the base of my skull. My whole being. Darling said it was nothing. But he was wrong. It's been there ever since, growing into a certainty, into an understanding of what's at stake here, what kind of a threat we're facing, and what must be done to stop it. The expedition into Slidescape 36. What Darling brought back changed everything. Has anyone else seen the janitor mopping up around the area? Isn't this restricted access area? Who gave him permission? Janitor. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. ये क्या स्पीकर? अच्छा मैं वो देख रहा हूँ ये भी स्पीकर है नहीं स्पीकर और ये के बॉक्सेस वगैरह इधर एक चेयर भी है To all dimensional research staff, I have heard that numerous people have been complaining about the sand piled up around dimensional research. This sand is precious research material from a foreign dimension and will be examined more thoroughly, and when I have time. If you attempt to clean or dispose of this sand, I will bar you from any further future research endeavor. You will spend the rest of your career licking envelopes in a cubicle staring at a cat poster. Do not touch my sand. ये सैंड वगैरह यहाँ पे है इधर भी सैंड है चलो पीछे बॉक्स भी है So is the area of apply Hadron Resonance Labs Light Projector Research. There was a doorway here, to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? जैसे आती ने दिखाया अपना विजुअल वैसे ये भी दिखा रही है मतलब ये जो है पोलारिस फ्रॉम फ्रेम
ये यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टर, ओके समझा। The projector's not here. Moved again. अब किसने What हिला do दिया I do प्रोजेक्ट? with it? I've got to find out. अच्छा, प्रोजेक्टर को ही चला के आई थिंक सो वो कहीं और चला गया है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन में देख पाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। एलन वेक के यूनिवर्स के स्टोरी लाइन मेरे को सही लगता है, बट ये जो एनपीसी में आई मीन जो बंदे को मारना पड़ता है उनको अगर फ्लैश एंड बोन्स वाले बंदे रखते तो मेरे को मज़ा आता पर्सनली। नहीं, उनको मल्टीवर्स और टाइम बेस्ड कुछ पावर्स वैसे करने थे एंड उनको थोड़ा सुपरनैचुरल फैंटेसी वाला ही रखना था। वो ऑलरेडी मैक्स पेन के साथ वैसे कर चुके थे। इसमें उन्होंने एक तो गेम प्ले मैकेनिक्स उनको डिफरेंट करने मिलता है, एक थोड़ा जैसे अभी ये जेसी फेडन, ये जो इसमें कैरेक्टर है, ये खुद भी पूछती है कि मैं मेरे को ऐसे पावर्स कैसे मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ, इज़ इट यूजुअल अनयूजुअल। तो जो दूसरी एक्सप्लेनेशन देती है बोलती है यहाँ पे यूजुअल अनयूजुअल वाला सीन ही नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है। सो एक काइंड ऑफ फैंटेसी में भी एक रियलिस्टिक रियलिज्म रखा है, सो दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। जैसे मैक्स पेन का वन ऑफ द you can say enjoyable segments is also bullet time, but it is also kind of a criticism कि उसको bullet time powers कैसे मिल गए। वो भी एक normal detective ही है और suddenly वो bullet time करके वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, slow down करके मार रहा है, bullets देख पा रहा है and all। तो इसके लिए they made a kind of a universe and एलन वेक के स्टार्टिंग में it was not a planned universe as such। वो एलन वेक का ही कुछ एक ट्रायलॉजी वगैरह कुछ बनाते जैसे मैक्स पेन का बनाया था, बट फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग का एक आईपी रहेगा जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे एलन विक के साथ एंड एक कनेक्टेड यूनिवर्स बनाएंगे एंड एक्सप्लेनेशंस भी देंगे उसके कि कैसा क्या है, क्या होने वाला है करके। चलो अभी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of 5 pillars like crude. हाँ, जैसे हम लोग ने देखा था। There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. The image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide, this side towards screen, and the number 30. Hadron Resonance Lab. Hadron and the Hadron Resonance are arguably the greatest assets this bureau has ever possessed.
The security of Hedron is unspeakably vital, which is why we have dash from the majority of Bureau employees. This report details the containment procedures required for the Hedron containment chamber, including details on the dash being pumped into the containment cell, mechanical upkeep of the resonance, acoustic pillars to damper. Sorry, for more information नहीं, for more information तो बाद में देखते हैं. इधर ये सब इसने बना के रखा हुआ है. हेड्रॉन इज ऑल्सो एन एंटिटी जस्ट लाइक पोलारिस जो जेसी को हेल्प कर रही है. ओके अभी ये पजल मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा. पजल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा राइट आंसर है. हाउ विल आई गेट दैट? डोंट टच या क्लासिफाइड, कौन सा सही है, ये वाला है या क्लासिफाइड? या जो बनाऊंगा उसके रिलेटेड कुछ आएगा क्या, ऐसा है? ये डोंट टच वाला ही मेरे को लग रहा है सही है. अच्छा नहीं, यहाँ पे साइड मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, इधर साइड में ही है. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron. We built a Was container that for it. you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. I remember her from Ordinary. I'm Dr. Casper Darling, and this is my final message. It's not the end. But after this, I won't. I exposed myself to Hedron resonance fully. It's changing me. I've seen. I've been shown so much. Slidescape 36 was where Hedron stopped the spread of another. It's terrifying. It really is. It's another source of resonance. Trench was exposed to this other. It will now spread. जो हिस की बात चल रही है आई थिंक, मतलब हिस से जो हम लोग फाइट ले रहे हैं. I've done everything I can to stop the Hedron resonance amplifiers. I don't know if it'll make a difference. I won't be here when it happens. I should have told him anymore. I'm being sent one more lesson. Something wonderful, I think. Jesse, we need to cook. We need to cook.
वो भी कुछ ऐसे कपड़े उतार के करता है ना, मतलब वो मिथेन के ये सब नहीं आने चाहिए एंड ऑल, ऐसे कुछ तो था उसका. Yes. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. ये वाला देखा ना हम लोग ने. Hedron based on its physical shape. अच्छा ये पूरा देख लेते हैं. 1 मिनट का है. I honestly think there's Less than 1 minute. the resonance it emits, the frequencies. We've never seen anything like it. We built a container for it, and we brought it in. This changes everything. It is beyond our understanding. We have brought so many questions with us through that hole in the wall. I will dedicate. I'm never going home. Oh boy. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. अच्छा इधर चल रहा है वो. कहाँ से जाऊँ लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, ऐसे ही जाना पड़ेगा. बैक ट्रैक करता हूँ. रिसर्च हेड्रॉन चेम्बर. रुको यहाँ से. It's not the end. But after this, I won't. I exposed myself to heavy resonance fully. It's changing me. इधर मेरे पास गन नहीं है. बैक ट्रैक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. यहाँ पे कोई दरवाजा है. The side projector only works with slide 36. Logically, this means the slide itself is a part of the object of power or a distinct altered item. But of course, I had to make sure no other slides worked. I had to try. I thought maybe emotion had something to do with it. Connection, history, love. I brought in my parents' old slides, birthday parties, vacations to Niagara Falls, my first day of high school and that kind of thing. There were 2 boxes worth. I had to dig around the garage for an hour to find them. Never once thought of looking at them since they passed. I tried them all. I waited until all the staff left for the night. I stayed up in that booth for hours trying everyone. Projector off, slide out, slide in, projector on, nothing happens. Projector off, slide out, slide in, projector on, nothing happens. Love wasn't the common factor. There's no correlation that I can see. Maybe the slide itself is the object of power. Why'd that kid have to burn the other slides? यहाँ से आई थिंक नीचे जा सकते हैं. ये Through here? You are coming through so strong. Darling used this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. इतने बड़े बड़े बोल्ट लगाए थे. Hi. I made it. Preparing for war. Azerbaijan and Armenia के बीच में things went south.
अरे यार ये वापस करना पड़ेगा अगर हार गया तो, मतलब क्रैश हो गया तो। हेलो। वापस से खेलना पड़ेगा। वापस से खेलना पड़ेगा वो पार्ट। हेवी तो है भाई गेम ये। कहाँ से शुरू करेंगे देखना पड़ेगा। क्लेंस द साइफन्स। अच्छा जितना तक किया उतना तक ठीक है। घूम घूम के जाना पड़ेगा। फिर भी ठीक है।
नहीं, no in-game sound or your sound. Why voice is not coming? वॉइस नहीं आ रही मेरी, एक सेकंड रुक जाओ फिर. No in-game sound, no in-game sound. Why no in-game? वॉइस आ रही है ना, इन-गेम साउंड नहीं आ रही है बोल रहा हूँ. अरे वो ग्लिच हो गया तो उसके चलते वापस से स्ट्रीम को स्टार्ट करता हूँ. आई थिंक ओबीएस बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा. एक मिनट रुकना का. यूवी, वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड ये सब क्या देखना पड़ रहा है. एकदम बढ़िया सब देखना पड़ रहा है. अच्छा हो गया एक तरफ से. 2-3 जगह पे ग्लिच हो गया ऐसे ही. कैरेक्टर गायब हो गई थी, फिर गेम क्रैश हो गया. डुअल पीसी करना पड़ेगा. पीसी गेम्स खेल रहे मेनली तो मेनली की बात नहीं है, खेलना है तो. सिंगल पीसी में दिक्कत है. मोबाइल और इसमें वो उतना दिक्कत नहीं होता ना. मोबाइल वाले में तो ये रहता है, ये एक स्ट्रीमिंग के लिए हो जाता है इसका. इधर पे आसपास में तो नहीं है ना.
अब वॉचिंग नहीं आ रही है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, 3 की वॉचिंग आ गई, उतनी काफ़ी है। नहीं देखना नहीं देखना, अभी उनकी मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अलग अलग गेम्स कवर करना चाहता हूँ जितने हो सके, एंड एंजॉयबल भी बनाऊंगा, बट उसके लिए थोड़े लोग आएंगे ना, मेरा थोड़ा वही दिक्कत है, वो मेरा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल लो या नेगेटिव पॉइंट बोल लो, कि बंदे कम रहते तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो ज़्यादा मेरा भी कुछ मैं बोल नहीं पाता। जब बंदे रहते हैं तब मेरे को टॉपिक्स वगैरह भी मिलते हैं और मैं उसमें एनर्जी डाल के स्ट्रीम भी कर सकता हूँ। चलो इधर ही मेरा अटक गया था ऑलमोस्ट, नहीं तो ख़त्म ही हो गया था मेरा। किधर जाना है? इसके भी टॉप में जाना है क्या? नहीं, इतना ऊपर तक तो नहीं जाने देगा। मेंटेनेंस क्या ये कर रहा है? जाना किधर है भैया, बताओ हमें, जाना किस तरफ है, कैसे जाना है? ओके, यहाँ से यहाँ, अच्छा 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 अच्छा, इसके पिछले वाला, ओके, इसके पिछले वाला लेवल देखना चाहिए था, क्या सॉलिड लेवल बनाया है, मतलब क्या हो गया, रो क्यों रही है? The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. मतलब? Hello? Polaris, are you there? Please. Let me sleep. Please. I just want to sleep now. I want to sleep. What happened? And what is happening? दोनों ही क्वेश्चन है क्या? कैस्पर डार्लिंग विद अ के, सी से सब जगह लिखा हुआ था। गेम डायरेक्टर लीव काकुसेला। ओ ओके 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 ओके, ये नहीं है, फाइनल एंडिंग नहीं है, ये फाइनल एंडिंग नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ ना, चल क्या रहा है ये। कोई अच्छा एडिटर मिला नहीं जो सस्ते में कर दे। एक मिनट, अरे ठीक है चलेगा। लोगो से कभी चैनल नहीं बनता, चैनल से ही लोगो वगैरह लोग ध्यान में रखते हैं। Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing The tomorrow. Bureau's the best at what it does, protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, when she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Check the notice board for tasks. Tidy up coffee cups. Please give me a chance. I can do better. You're late. I'm sorry, ma'am. That'll be all. Anything for the Bureau. इतना सब करना पड़ेगा? That'll be all. My pleasure. I've got nothing more for you. No problem.
Thank you for giving me a chance. Why do they keep you around? Please give me a chance. I can do better. Do your job. I'll do my best. Time is money. It won't happen again, I promise. काम करने पड़ेंगे क्या ये इतने बार? You're dismissed. Thank you. Thank you. Let me know if you need anything else. Time is money. I'm sorry, sir. यहाँ पे ये लेटे हुए हैं। Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. ब्लैक एंड वाइट है और ये लिपस्टिक विपस्टिक लगाई हुई है। Not now. I'm busy. Come back later. Sorry. Sorry. आती हेल्प कर दो। डायरेक्टर्स ऑफिस में जाने नहीं दे रहे हैं। ज्यूक बॉक्स अभी भी है वहाँ पे। घूम के आ गया तो वापस मौका मिलेगा क्या डायरेक्टर के ऑफिस में जाने का? Oh. Someone has to take it in. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. See, please, take the outgoing mail as well. Thank you. Very good. Better run along now. Have a lot of work to do. Important bureau business. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Oh, where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? I want it to end. Wake up, please. I want to go home.
day. Take control. You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. Who is it? What do you want? Go away. Don't bother me. और ट्राई करने पड़ेंगे. वापस से मेल वगैरह कुछ आएगा शायद. पिछले बार मेल आया था कि डायरेक्टर को देना है. अंडरहिल. Time is money. Money. Get moving. यस वेकर वेलकम टू स्ट्रीम. लोगो वगैरह का थोड़ा दिक्कत है, मैंने ढूंढा बट अभी टाइम लेना पड़ेगा ज़्यादा अच्छे से बनाने में. यो अर्नब वेलकम टू स्ट्रीम. भाई हेल्प विच गेम आई टेक कंट्रोल ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 न्यू वन. Whichever you like. Control is a part of a series of games. So you need to play Alan Wake 2, and you have to play Control Ultimate Edition. अच्छा, कोई भी एक टास्क कंप्लीट करके आई नीड टू गो टू द डायरेक्टर्स ऑफिस. We've been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. We've been invaded, corrupted. I've lost Darling. He was the first to go. He's been exposed to Hedron's presence. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. I won't let them win. That's how it happened. The hiss got Trench first. He turned on the projector. Okay. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. This is all inside my head. The hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over.
I will fight this. I will find a way to push them out. Ati. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Oh. I need my gun. The Thunder Soul. You are a worm through time. The Thunder Soul distorts you. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Hello, this is Dr. Casper Darling. Okay. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedron is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the Endgame. It will be revealed. Verdict is made right. Leave your insides by the door. Push your fingers under. Push your fingers. Everyone is Jesse Faden now. How do I go to Casper Darling's office? Gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there's something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Really? Hola, Ironman, welcome to stream. Federal Bureau of Control Records. Guys, जो देख रहे हो, welcome to the stream.
हवे वाला इन्फ्लेटेबल गिटार है। मेरे को मेरे ग्रेजुएशन के फेयरवेल में मेरे को और मेरे दोस्त को दिया था। ये क्या था? जस्सी पोलारिस। One constant. They revolve. अरे आज के लेवल्स क्या थे? एंड गेम की तरफ है ना हम लोग। You're alive here in me. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there. And she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Okay. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. हाँ ये काफी टाइम से ऐसे ही। Dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. काफी टाइम से ये एरिया करप्टेड था, अभी जाके ओपन हुआ है। They'll try to stop us. इसके पहले का एक लेवल है एक्सट्रीम करके, वो अगर बैक जाके देख पाओगे ना, अरे क्या लेवल था यार। वो गाना चल रहा है लेवल्स में, पूरा इंसेप्शन लेवल समझ लो। इंसेप्शंस में कैसे होता है, वो रियलिटी चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। कल हम लोग ने कुछ कुछ किया तो बहुत कम लेवल का था। आज वाला तो मतलब बिल्डिंग ऊपर जा रही है, नीचे जा रहे हैं, नीचे से कुछ ओपन हो रहा है, ऊपर से कुछ ओपन हो रहा है, साइड से कुछ ओपन हो रहा है, कुछ बंद हो रहा है, कोई एनिमी आ रहा है, वो क्लोज डाउन हो रहा है, ओपन हो रहा है। अरे अलग अलग लेवल का था वो। आज के लेवल्स बहुत तगड़े थे। बीइंग करप्टेड रिवायर्ड, रेडिश येलो आउटर। चलो हमें हमारे पावर्स मिल गए, वही सही बात है। She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. कहाँ जाना किधर है मुझे? I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. सब लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं? गेम एंड होने को है क्या? हाँ, मेन स्टोरी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Locked inside. I know because that's how it was for me. क्या बात कर रहे हो? ये लेवल 30 वाले हैं, एक एक झटके में मर रहे हैं। अरे नहीं, हेल्थ चला गया। उधर कैसे जाऊं? उधर तक जा सकता हूँ?
एक एक गोली में जा रहे हैं ये तो। नहीं यार, अच्छा एक एक लेवल पे जाके खत्म कर रहा है। उन्होंने मेरे लिए पावर बूस्ट भी दिया है। और भी कोई बाकी है? जब तक म्यूजिक बजेगा मतलब तब तक कोई बाकी है। आसपास में दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा ओपन हो गया ना नया वाला। अरे नहीं 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 नहीं, क्या हेल्थ फुल हो गया। मर गए। अरे नहीं, किधर गया?
गया? अरे अभी भी है। अभी भी म्यूजिक बज रहा है। एक मिनट चैट देख लेता हूँ, कोई चैट तो नहीं आया। मुझे तो इस गेम का कुछ समझ नहीं आया। बताता हूँ। काफी गर्म है, थोड़ा बाद में पीता हूँ उसको। पूरा नहीं देखे ना, थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब थोड़ा फॉलो अगर रेगुलर करोगे तो ही कर पाओगे। इतना इजी नहीं है, बट मैं उसको करता हूँ, मैं एक्सप्लेन। पहले फाइट वाले सीक्वेंसेस इसके खत्म हो जाए। आई थिंक बंदे के पास जाऊंगा तब जाके म्यूजिक थोड़ी तेज हो जाती है। अगर मैं एनिमी से थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो म्यूजिक धीरे होने लगती है। थोड़ा नोटिस करना। म्यूजिक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे है अभी भी कोई फाइट करने के लिए, कोई ना कोई है, या फिर नया वो ओपन हो गया है दूसरी तरफ जाने के लिए। ओपन हुआ है अभी तक? कुछ दिख तो नहीं रहा है। गेम उन्होंने इजी समझने के लिए उतना इजीली नहीं रखा है वो। मतलब वो ऐसा रखा है कि थोड़ा फॉलो करके समझना पड़ेगा। क्लूज थोड़े अपने दिमाग से जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे दूसरे गेम्स थोड़ा हैंड होल्डिंग करते हैं, इस मामले में इसका वैसा नहीं है। तो इन अ वे अच्छा भी है। मतलब जो ऐसे चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उनके लिए तो बहुत सही है। बट जो कैजुअल होते हैं वो थोड़े आइसोलेटेड फील करते हैं अपने आप को। फिर यहाँ पे म्यूजिक तो बज रहा है, बट है किधर बंदा? फाइट करने के लिए तैयार हूँ, बट बंदा ही नहीं दिख रहा। कहीं फंस गया, कहीं ग्लिच हो गया। क्योंकि मारूंगा नहीं तब तक तो शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और अभी नीचे गिर गया तो फिर वापस से क्या पता रीस्टार्ट करना पड़ जाए। पीछे जाके फाइट तो नहीं करना पड़ेगा? मैं तो कैजुअल ही हूँ फिर। अरे तुम तो उतना देख नहीं पाए ना, तुम्हारा जॉब है। मैंने लंबे लंबे स्ट्रीम्स किए इसके लिए। इसमें तुम्हारा दोष भी नहीं है। तुम खेलोगे तो अपने हिसाब से खेलोगे। शायद हो सकता है एक एक दो दो घंटा ही खेलोगे। वो पीछे जाके देख के आता हूँ, कोई छूट तो नहीं गया। इसके पजल्स वगैरह भी हमेशा उतने इजी नहीं रहते। थोड़ा फिगर आउट करना कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। एंड गेम भी उतना इजी नहीं है। जैसे इतने पावर्स है, लगता है कि यार ये तो इजी होगा, बट नहीं, वैसा भी नहीं है। नहीं, ऊपर भी नहीं जा सकते। म्यूजिक बजे जा रहा है, बट क्या सीन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। देखो अभी ये क्या सिचुएशन है, म्यूजिक बज रहा है तो यूजुअली एनिमीज से फाइट होती है तब म्यूजिक बजता है। मैं इतना दूर आ गया। अभी तक तो कोई एनिमी दिखा नहीं मुझे। चप्पा चप्पा छान मार लिया मैंने। लीप ऑफ फेथ वाला इशू तो नहीं है?
आया आया। जा उधर फट गया जा। अच्छा इनको भी ज़्यादा ये नहीं मारना पड़ता है, ठीक है। ये वाले थोड़े परेशान कर देगा। ओए अरे हो गया। ये फटने की हालत में इनसे दूर रहता हूँ। अरे अभी भी आ रहे हैं, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कहाँ से गोली कहाँ से पड़ रही है? कोई गोली भी मार रहा है। खत्म हुआ। हाँ फाइनली खत्म हुआ। चलो बाय, टाइम हो गया जाने का। अरे अरे कोई ना, चलो बाय बाय।
Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. खत्म. I'm the director Main story of the खत्म. Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Finally भाई. Courtney Hope, Chowdhury. इधर इंडियन नाम देखने नीचे मिलेंगे इंडियन नाम. काफी नीचे जाना पड़ेगा. फाउंडेशन टीम. अच्छा फाउंडेशन ये डीएलसी है और ये भी डीएलसी है कुछ. फाउंडेशन एंड AWE वाला 505 गेम्स. ध्रुव ये है पूरे. मुकुंद राव, विशाल जैन, अभिषेक बैनर्जी, अभिलाष, आकाश, अमित, अन्वेश, आशीष, विक्रम, गौरव, कार्तिक, कुशल, मनोज, मयूरेश, मोहित, मोहन, राजवीर, राजेश, सुब्रजीत, प्रभगरन, लिटिल रेड जॉम्बी, श्री रामचंद्र, अंकित गर्ग, नक्षत्र, आलोक, धनंजय, अभिषेक, संचित गर्ग. बहुत सारे ऐसे हैं. हाँ पूरा एकदम टीम इंडिया के कुछ बंदों को एक पर्टिकुलर पार्ट संभालना है. ग्राफिक्स वगैरह का संभालते हैं, एनिमेशन का पार्ट संभालते हैं. फ्रेंच कास्ट, स्पेनिश कास्ट, जर्मन कास्ट. स्पेशल थैंक्स. अपने कुत्ते बिल्लियों का भी नाम है रेमेडी पेट्स. म्यूजिक में कौन कौन है? डायनामाइट, टेक कंट्रोल, डार्क डिस्क्वाइट. The hiss is removed, silent from the astral plane. You have proven beaten. The not you. We tolerate you very much. You are prepared, unprepared for what comes next. The future expansion. Good work, Victory Director. Endless grind. बहुत इंडियन लोग हैं, ऑलमोस्ट रहते हैं. Trapped in the darkness of the coffee I nurse, the rain turns the lights of the city into a mosaic on the windows. The day's paper lists all the things wrong in the world. The list grows longer by the day. The difference between the morning and the night: coffee, whiskey, no other difference. The alarm goes off at 5 a.m.
It feels like I just closed my eyes. It's dark. I sit up on the bed in the gloom. I get up, I shower. The driver waits for me downstairs, takes me to the oldest house. An old man stares at me in the car window. It's raining. It's dark. Late at night, he brings me back here. It's not a home. It's a room where I sleep in. Waking up just as tired as I was before going. इसमें इसके बीवी बच्चे मर जाते हैं. Endless grind. Case files, slide projector. The object is a darling presentation. Object has not been successfully bound. The para utility of this object does not require binding. Discovered. Research and records. Director feed and photograph. I'm the director of the FBC. You are the director of the FBC. The crisis is not over. Your work is not done. ये endless grind चलता ही रहेगा. गेम में अगर continuously खेलना है तो. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Not important, but मैंने पहले बोला भी था Shawshank Redemption. हाँ. वो अभी आके बोल रही है. पूरा गेम खत्म होने के बाद. न्यू मिशन द फाउंडेशन. ये अब अपना पहला DLC शुरू होता है. द फाउंडेशन. Walter White in an alternate universe. There is no Skylar and he is to continue to live a peaceful life. और तुमने अगर वो वाला एलन वेक वाला नहीं देखा है तो वो दिखा देता हूँ. वो किधर है? शायद सबसे लास्ट में AWE समथिंग कुछ तो था वो. नहीं ये नहीं है. तो डार्लिंग प्रेजेंटेशंस नहीं. डार्लिंग प्रेजेंटेशंस नहीं है. All right, take this down. अरे वो किधर गया? We used to play this. अच्छा ये वाला हाँ. Darkness engulfed the elevator. There was something there. A presence. Jesse Faden could hear it. A call. तो लिटरली लिख रहा है वो. Reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star. Polaris and Dredge. Perfect receiver. As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. The force at play here. It was changing things around her. Subtle. Trying to make her act. Faden didn't like that. Her guide felt it too. Polaris didn't flare up in defense as with the hiss. So it wasn't all bad. Not a hostile transmission. It was powerful, but it was coming from far away. And made weak because of the distance. It was a distress call. Faden sensed... एलन वेक का कैमियो था क्या? अभी है और भी है. She sensed something else too. A hunger in the dark. Not unlike the hostile resonance. Waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. पहले फाउंडेशन खत्म करते फिर एलन वेक वाला खत्म करेंगे DLC. That made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation sector. जो कि मेन गेम में नहीं है. वो DLC का हिस्सा है करके. एग्जीक्यूटिव हॉटलाइन चेंबर. डायरेक्टर्स ऑफिस से डायरेक्ट ही जाता हूँ ना. Jesse Faden, Director of the Federal Bureau of Control.
I still don't quite believe it. But इधर कुछ you always knew where we were headed. फोटोग्राफ्स वगैरह थे HRA अरे ये क्लॉक भी इधर है परेशान कर दिया क्लॉक ने ये तो बहुत पहले से ही था ये वाला बट पहले से क्यों फोटोज थे वो नहीं समझा मुझे अभी यही है ना Even if it was a dream, I feel Darling reached out to me through the hotline. I have a feeling he and Trench will be. Situation crisis. Uh-oh, in Foundation. We demand your attention, Moxie. Oldest house is in danger. We open the door, tree in maintenance. Hurry, post haste. Problem in the Foundation. That was Auti's vacation spot. We need to check this out. रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना पड़ेगा अच्छा रेस्ट्रिक्टेड एरिया इसके लिए उन्होंने रखा है वैसे के वैसे एलन वेक का कैमियो था क्या यस यहाँ से नहीं उल्टा जाता वैसे इनसे बात कर सकता हूँ बात कर सकता हूँ Analysis of his threat part 5 Director Jesse Faden His corruption manifests in vastly different ways. Some hosts remain largely unchanged while what levels additionally his possess various para-natural abilities. How they achieved as a scientist I have hinted. यही है ये अंडरहिल है ना अंडरहिल भी आ गई यहाँ पे Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all eradicated. If any hiss ever got out, that would be the end of everything. Well, eliminating them all will take time. Look, I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can help with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the hiss out for good. That's... Really? I mean, yes, I can certainly... Yes! Yes, I accept. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. I'm honored, Jesse, really. Thank you. और कुछ इससे क्वेश्चन पूछना बाकी है क्या? We found in dimensional research. That slide projector is extremely powerful. You were right to shut it down. Okay, हाँ यहाँ पे पूछ सकते हैं अभी. How do you feel about me taking over as director? You act like it just happened. You've been director since we first met, remember? I am still thrilled. Nothing's changed, not for me. But the Bureau has changed. Trench and Darling are gone. Their knowledge, anything not written down, disappeared with them. ये तो हमेशा का ही है, होता ही है. They're the Bureau's past, Emily. We won't operate like they did. We'll learn from their mistakes. We'll be better than they ever were. We won't ever be like them.
When the hiss got into my head, I saw some weird things. I think Darling even spoke to me. Does that make any sense to you? Empirically, no, but phantom voices as well as hallucinatory states are not uncommon here. And considering the forces that Dr. Darling was working with, he could have been transferred to a different plane of consciousness, physically or otherwise. And that doesn't upset you? Oh, very. The fact that he hid those forces from me, it's infuriating. But Darling's dream was always to look beyond our reality. This time he may have taken a step too far, but as long as his consciousness can perceive his surroundings, I'm sure he's loving it. Maybe Darling was just trying to protect you from the darker side of his work. Fuck that. I'm not a child. Don't just assume I'm going to consider something morally repugnant. Which it all was. Which it all was, of course. How was Dylan? The same. I can't detect any hiss activity, but his physiology has certainly been altered by it. And I can't tell if his brain activity is genuine or simply the aftermath of the hiss, like spasms. Dylan could wake up tomorrow for all I know. I really can't say. Then I just have to wait for him. That's fair. He waited a long time for me. Don't worry. We'll be monitoring him round the clock. If he wakes up, we'll be ready. I don't mean that in a hostile way, just... well, you know. I hear you. My brother isn't exactly popular around here. I hope one day he'll have the chance to change that. So, there was a moment after Hedron died that I couldn't feel my powers. The hiss got into my head. Just for a moment. So that explains the HRA outage. Before we knew what was happening, the hiss had us. They were in my head. I saw terrible things. I mean, I was about to go under forever when the hiss was pushed back. The HRAs had come back on. Dylan vanished afterwards, and we fought off the hiss that came after him. So if Hedron's death knocked out the HRAs, that means there must be a new local source for them to relay, which I'm guessing must be... me. You. Hedron is dead, assuming that word even applies to a resonant-based life form. But whatever it awakened in you, the power you call Polaris, is still active. Or at least, that's what my instruments are telling me. I don't think we're ever gonna understand all of this. And I'm okay with that. But I'm not okay. You're here with me. That's good to know. Thanks, Emily. I found Dylan attacking the astral plane and the board. What was he hoping to accomplish? Huh. Since they arrived, Hiss have been corrupting objects of power, which have an inherent link to the astral plane. Maybe their goal was to access the astral plane and the board itself. That still doesn't tell us why. His motives are a difficult thing to work out, but I have been digging through confidential files and noticed a strange gap in knowledge regarding the board. Looks like any data on them has either been deleted or was never gathered in the first place. Then maybe it's time someone looked into that. Maybe it is. Chalo. Well, I've got a bureau to run. See you soon. Yes, ma'am, Director Faden. Please, Emily. Not even as a joke. अच्छा ये अंडरहिल नहीं है मुझे लगा अंडरहिल है Any luck finding the armory? None. Looks like it got shifted. I heard you closed the Hiss portal, or whatever it is we're calling it. And if we could just flush out the stragglers. So,
What's next for Simon Arish? Well, first off, I'm banning all slide projectors. That's it. Seriously, though, we need to review our protocols. Research should not be making decisions that endanger the entire Bureau, fuck it, the entire fucking world, without some serious oversight. I think Pope would agree. Certain people in the Bureau have been working in the shadows for too long. And I'd like to make these HRAs part of the mandatory Bureau uniform. They're not stylish, but better safe than sorry. I don't think anyone will complain. Not after this. What are your thoughts on me serving as director? Well, I couldn't be more excited. I mean, look, don't get me wrong, Trench was fine, but well, you pulled us back from the brink, so... Well, I'm honored to serve, man. I mean, fuck, shit. Phaeton. Sorry. He'll get it one day. So, what's the situation in my bureau, Arish? The situation is we are still up to our eyes in Hiss. Not to mention the months of repairs it's gonna take just to get this place up and running again. But is it doable? Of course it is. You just might need to tell some rangers to grab a wrench once they're done hunting Hiss. Did anyone ever mention to you that Darling was using the slide projector? Salvador never did, but I doubt he even knew. Look, I'm well aware that it's our job to study and contain the things that we don't understand, but some of the things that Darling did were way outside of our mission statement. Look, these things are not toys, and acting like they are is only ever going to end one way. At least Pope seems to understand that. Well, it's secure now. No one can reach it without my say-so. But thank Christ for that. अच्छा 1 मिनट आया मैं वॉशरूम से आता
Easy it is that way. Marshall's been missing for a while now. Any ideas where she could be? हाँ मार्शल काफी टाइम से गेम में नहीं दिखी. When I was leading the Rangers out of the Atlas. Yeah, I told her it wasn't safe, but she said she had to go check on something. Did you ask where she was going? शायद मार्शल ने कुछ कांड किया इस बार. Marshall is not the kind of person you question. Kind of intimidating, you know. But she was by herself. If that helps at all. Not really, but thanks. Hopefully she turns up. I'll see you later. You know where I'll be. और कोई बचा है यहाँ पे? बोर्ड रूम तो देख लिया ना हम लोगों ने. Abilities. Launch 3 object. लेविटेशन फुल कर लिया. डायरेक्टर P7 ऑफिस असिस्टेंट. डायरेक्टर सूट सही है. एस्ट्रल कंस्ट्रक्ट में कंस्ट्रक्ट स्पेन ग्रेट. चार्ज वाला ही बहुत इनफ है. 99% डैमेज अगेंस्ट आर्मर. रिकॉइल, एमो रिफंड, एमो पर शॉट, रेट ऑफ फायर, डैमेज बूस्ट. एक काम करते हैं, एक बार जाते हैं सेंट्रल रिसर्च में और उधर एक बार चेक करके आते हैं अंडरहिल कहाँ मिलेगी. क्रेजी 8 तो पतला सा एक था ना ऐसा. ओ कुछ तो बीनी पहनता था सर पे. Guard duty down here. Do you need something? I assume you'll be staying with us until the mold is eradicated. Indeed. Until I find a permanent resolution to this pesky fungus business, I'll be here. Perhaps even beyond that, seeing as you are quite understaffed at the moment. Though I hardly have a say in my own comings or goings. Your oldest house won't open the exits until those hiss monstrosities are cleared out. Glad to have you along for the ride. Will the mold be under control anytime soon? We were barely containing it with weakly controlled burns. Just look at how it has spread after a few days of non-interference. It's beyond the threshold now. The floodgates are open. So that's a no. Americans. With Darling gone, I'm putting Emily Pope in charge of the research sector.
Are you okay with that? Perfectly. You have pulled Excalibur from the stone, and now decree as you see fit, O Queen. What a true meritocracy we live in. Glad to hear it. I had a dream. Or something like one. Darling was there. He told me something, but I can't remember what. I think he's gone. Right. Well, he's never where one expects him to be, is he? Well, thank God. I can finally stop writing these tedious reports that I'm sure he never even took the time to glance at. If you speak to him again, can you tell him I hope he found what he was looking for. I'll try. I should be getting back to work. I'll see you later, Rhea. Dr. Underhill, if you please. I hate guarding down here. चलो यहाँ पे सबको बात कर लिया है. तो काम ही नहीं कर रहा. वैसे इंग्लैंड का फाइनल स्कोर क्या हुआ आज का? पैरासाइकोलॉजी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है ना. यहाँ से चलता हूँ. डोमिंगो करके जो था नाचो का राइट हैंड काइंड ऑफ. हाँ अभी उतना ध्यान नहीं है. This place really suits Ati. ओके यहाँ पे जाना है. Itching is the door. Okay, let's try. डायलॉग बोलने से पहले अंदर चले गए. No time for sightseeing. The board said this was an emergency. Looks like no one's been down here in a while.
ये क्या है ऐसे ही? Crystals are kind of pretty. Emily would be having a field day down here. What's that light? My life's been a strange one. Deep cavern. Stranger than I'd like it. But this place, it's something else. The floors crawl, the walls slither. It's a shifting pit. On the street, it's just another drab building standing there for anyone to see. But no one does. Acting director, Northmore. Is on a train from Washington. He'll expect answers, which is why I'm making these tapes. They're evidence that I'm at least trying to understand. Father searched his entire life for something like this, and we find it 1 week after he's buried. He always hated irony. Of course, Father, the great director, Ash, would have been the first man in. And look at me, his bookworm son. The supposed head of research who can't stop his legs. अच्छा नॉर्थमोर का लड़का है क्या? Step over the threshold. इधर कुछ भी नहीं है. Foundation. Bottom of the oldest house. Stop the hiss. Marshall? How was she on the hotline? Unless she's dead. Jesus. She seemed like the kind of woman who could survive anything. चलो फटाफट चलते हैं उसके तरफ. यहाँ पे कोई ना कोई शायद मिल ही जाएगा हमें. बोला ना कोई मिल ही जाएगा. हाइट और ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा मैं? मेन हाउस में भी कुछ जगह पे थोड़ा हाइट ज़्यादा थे. ये सब टूट रहे हैं बट ये कुछ सर्टेन पत्थर में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे तोड़ नहीं पा रहा था. अभी मिलेंगे वापस.
डीप कैवर्न खोलने नहीं दे रहा ये. अच्छा ये भी ऐसे ही है, मतलब नीचे गिर गया तो खत्म. Presume the images are ancient. Radiocarbon dating suggests something impossible, that I have been down here longer than the paintings. That's absurd though. The style and medium clearly indicate a Paleolithic origin. I was ready to conclude that an ancient community of humans lived in or around the oldest house. Now with this information I don't know what to think. Is one of our agents drawing these, or is there someone down here with us? The place has a habit of skewing my results, so perhaps the data is corrupted, or perhaps some paintings were created at different times. The art does seem to chronicle not only the past but also the present and possibly even the future. I see in them echoes of the board, some linear architecture, even what could be interpreted as a director. Are the paintings telling a story that's still being written? If so, who is writing it? My life's been a strange one. I only heard of the Foundation when I became head of operations. The very bottom of the oldest house. Director access only. Just the name alone is classified. Zachariah gave me a tour the day I was promoted. Said I should see it for myself, to understand. After that, I snuck down on my own from time to time to keep tabs on the place. And on them. But nothing ever changed down there. Not even the walls. It's solid, permanent, different from the rest of the house. Of course, they were always watching me. I never stayed long. I'm not stupid. Who is they? I have to stop the hiss from finding this place. I'm the only one who can. अरे यहाँ से आया मैं. आया यहाँ से मैंने सामान उठाया. Now. Federal Bureau of Control. Tom, you missed the good news. I am sure the official memo will go out soon, but not more called and all hands at the crossroads to announce we are finally moving out of this hellhole and up into the house proper. Bureau Brass apparently solved the moving walls problem, or at least figured out a way to pinpoint where and when they happen. All I know is going up means goodbye darkness, goodbye weird lunches with that ex-Nazi scientist, and goodbye pissing into the pit. I know that was you, Barry. Northmoor's ordering the Foundation sealed as soon as we can haul our stuff out and somehow convince Ash to come with us. He's the only one kicking above us. This is a long overdue. We have lost 11 men and damn near $10,000 in supplies moving between the entrance and the Foundation. For what?
Research. Ash is batty. If he thinks we want to stay here and sift through more sand for him, it's just rusted iron flakes anyway. Did you know that we were breathing that shit in? His sharpened. Momentary time manipulation, brief increase in physical speed, inhibiting the witness's sense of sight. We do accept the hiss sharpened if it is not connected to a known object of power, then the hiss are manifesting unique paranatural abilities, or there are objects in the house that we aren't aware of. Either way, the hisses continue to develop new strains of corruption. Conceptual material shifting fragment. Those paintings look old. Like, old. कौन सी की पेंटिंग की बात चल रही है? अच्छा इससे डैमेज ही होगा। मेरे को लगा कुछ ऊपर ऊपर जाने का सिस्टम तो नहीं है। ग्राम पॉट्स ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया था, ऊपर भी एक ही चीज है, सेम नोटिफिकेशन। melee health boost. The astral plane is cutting into our dimension. What if this happens in the upper floors? It'll destroy the bureau. अच्छा इसके लिए ये चल रहा है कब से कि फाउंडेशन में आके बचाना है, ये करना है, वो करना है। I wish I'd brought Emily with me. I could really use my hair research right about now. यहाँ से भी जा सकते हैं क्या? अच्छा वहाँ से आ सकते, जा नहीं सकते। अगर मैं केव सिस्टम दूसरे तरीके से यूज करता तो। Marshall? Marshall, you're alive. Wait, it's Jesse, the director. मार्शल मर चुकी है ना मोस्ट प्रॉब्ली। Whoa, this place is huge. सोचो। Can you hear me? Marshall. So that person couldn't have been Marshall, right? ये ओपन करना पड़ेगा। Let's see what's going on with that pillar first. Investigate the nail. Energy recovery on taking explosive damage. Astral copy.
With the astral plane now physically accessible, a torrent of new information has been collected on the entities. But ये किसने बनाया ये report? The copies' bodies are composed of a dense stone-like material that is both resilient under controlled circumstances and brittle when struck with significant force. Whether the astral copies possess individual consciousness or are directed by a higher intelligence such as the board remains unknown. That they appear immune to his corruption. और कुछ है यहाँ पे? नहीं है. क्लेम करना पड़ेगा. कंट्रोल पॉइंट कर लेंगे वो तो. फाउंडेशन पिलर. भी इसके भी अंदर जाएंगे हम. So I can only choose one? I thought I was done with these tests. Domingo.
वो रीग्रो होगा क्या? मर गया ना? गाइस जो भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारा मेन गेम कंप्लीट हो चुका है गाइस। हम लोग अभी DLC कर रहे हैं। क्या क्या इन्होंने बना के रखा है, यूनिक मॉड्स इतने अलग अलग। Locks, keys, keep us, socket us here, trapped, hooked, hidden, fed. They are old, young, extra life, with the director's help. Situation information is subject to change. A mutual fund है क्या? Subject to change. This broken pillar is called the nail. It was broken by something, and now the astral plane is bleeding into the foundation, which will destroy the oldest house, the bureau, and everyone inside. I need to find 4 locks or keys or whatever to stop that from happening. But I'm the director. I've handled worse. This should be simple-ish. You with me? टक्कर मारेगा वो? अरे तो जा ही रहे हैं वो। इन्फिनिटी। हाँ उधर कुछ है। जाने का कोई रास्ता है वहाँ पे? अंधेरे में लेके आ रहे हैं। ऊपर कैसे जाऊंगा? नहीं यहाँ पे तो नहीं है। गिरूंगा फालतू का, निकल जाता है यहाँ से। ऐसा अंधेरा करने का मतलब ही नहीं है, कुछ दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से? इसमें थोड़ी एलन वे गई है। इसको क्यों अंधेरा करके रखा उन्होंने? Concussed energy recovery. Energy gained from taking melee damage. हाँ इसमें क्योंकि melee ही ज़्यादा होगा ना इसके लिए।
It's been 5 days since we first entered the building. Traversing the interior is dangerous due to the shifting, but we did manage to find a lower cavern that seems structurally predictable, which is a scientific way of saying its walls won't crush us in our sleep. Northmore even made a discovery. A pistol placed on a stone pedestal in front of that strange ebony pillar. Seems like something out of a storybook, except the heroes usually find swords, not handguns. But it is the perfect lure for someone like him. Hours after finding this weapon, Northmore cornered me to spout some nonsense about how the board had made him the director. Acha. He ranted about the title being meaningless before now, calling Father and all other previous directors shams, frauds, and worse. I think this place is worse for Northmore than it is for me. Strangest thing? There was no pedestal in front of that pillar a day ago. This building has swallowed a dozen of my men, and now it's handing out presents? Is it playing some sort of game? If it is, we're most certainly losing. We don't even know the rules. Let's go. रिसर्च साइट गामा जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे ही है ना. I've served under 2 directors. 3 now, I suppose. Trench and I worked our way up together. We made it through the tough cases, the bad days, the casualties. He was the epitome of a good agent. Smart, decisive, selfless. And he picked up that damn gun. Becoming director is a formal process overseen by the board. Lots of ritual and mystery. After that, key staff provide detailed briefs on all classified matters, past and present. But with Faden, well, there's no protocol for field promotion. The girl's smart, has a good head on her shoulders. Okay. I'm trusting her to handle the hiss upstairs, while I hold them off here. All this shit with the nail, the board, I'm not sure she's ready. Besides, I work better alone. उसी के चक्कर में मर गई है. It's been 5 days. Hey. Not sure she's ready. I saved the Bureau once, and I'll do it again. Astral collision. That's the cave sand. Looks like the astral bleed goes both ways. Where everything? There's a person in my pet salamander.
He has human eyes. Why doesn't anyone else see him? I think it's like werewolves, but with every animal. Were dogs, were cats, were otters, were butterflies, were everything. There are people inside and they can't get out. They are stuck in the animal body. It's not all animals, but it can be any animal. My parents don't believe me. Maybe this has happened before. I thought you would know. Sincerely, John Lomain. वो कुछ नील का कुछ बोल रहे थे जब टिलन ने बोला था. और कितना बाकी है ये शायद छोटा ही है. आज कितना बजे? अभी 8 बजे क्या? कल लग जाएगा शायद, बट कल पूरा नहीं लगेगा. कल थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 8 बज गए. देखता हूँ आज जितना लंबा रहेगा उतना लंबे तक करके आज ख़त्म कर देता हूँ. आज नहीं हुआ तो कल आई थिंक 1 घंटा लगेगा शायद मुश्किल से. इधर है, नीचे नीचे नहीं गिराना है भाई. नहीं तो पंगा हो जाएगा अलग. ऊपर तक जा सकता हूँ. ऐसे ही जाके देखता हूँ.
छोड़ो, मेरे को ही लगता जरूरत पड़ेगा उसका। पहुंच गया। खत्म कर दो आज ही डिनर करके। वो चैन नहीं हो रहा है ना, वो एपेक्स खेल। एपेक्स खेलना है, एपेक्स खेलना है। चलो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, डायरेक्टली जा सकते हैं, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। ये क्या दोनों में से एक चूज करना है मुझे? हाँ बोला ना, दोनों में से एक चूज करना है। ये वाला लेवल्स तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को खेलने में। मर गया। उसको नीचे गिरा दिया, खत्म हो गया वो। उधर तक पहुंच जाएगा। खत्म कर दो आज ही। अभी तो देखो पता चल गया है तो मैं फटाफट कंप्लीट कर सकता हूँ जितना हो सके। बट इसमें जितना नेचुरली टाइम लगेगा वो तो लगेगा। इसमें क्या बोला है, 4 कीज हैं अलग अलग। 4 कीज को ठीक करना है, तब जाके बोर्ड ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें। ऊपर जाना है कि यहाँ से? आई थिंक
इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। डैमेज 67%। हाँ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। एस्ट्रल मिमिक, ओके किधर गया मल्टीमीडिया। Reminder: the bureau does not have windows. अरे हाँ इसके If आगे you का notice a सुन। window, immediately close your eyes and make your way to the nearest safe अच्छा room. विंडो देख You लिया are था। permitted to fashion a blindfold from an article of clothing. Any resulting lapse in dress code will be excused. Thank you for your attention. उधर हुआ था मौत का नंगा नाच। %63%। और कोई बचा है? यहाँ पे और कुछ है कि एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ। हो गया क्या फाइनली? यहाँ का एक शायद हुआ रहेगा। There's been a change. Gate numbers 3 and 11 attacked my staff today. 2 fatalities. 3 if you count Abel. She was always so kind. As a result, we are abandoning the Foundation. Northmore gave the order to transfer our resources to the upper floors. Now that my control points allow us to safely come and go from the New York streets, did I forget to include that fact in my previous logs? I've been so busy.
using the arrays I made. Control points have been established throughout the oldest house. Excuse me if I'm excited. It's just a few months ago, I would have been overjoyed to leave the Foundation. But now I realize I've grown fond of it. Something deep in the stone here, deeper than that watching presence. Something warm. I feel it needing me. I won't go. I refuse. Northmore won't be happy, but so be it. I'm starting to see him for what he is. An impotent storm. Father Shade in a cheap suit. Map area. Yeah. Special kids. Dude. Yeah, literally bored. But जाना कैसे है? Story एक illusion बन गया तो प्लेटफॉर्म पे
गेम अटक गया, गेम अटक गया, गेम अटक गया। आवाज तो आता रहेगा शायद। आवाज आ रहा है ना? हाँ, फिर भी ये बंद करना पड़ेगा एक बार। वापस से रिज्यूम हो गया रहेगा। सिंपली गॉन। बहुत सारे लोगों ने मिलके काम किया इसमें। जरूरत भी है, ये बहुत एपिक लेवल का गेम है। बहुत, मैं तो बोलूंगा कि अंडर हाइप्ड है। अंडर हाइप्ड, नॉट जस्ट अंडर रेटेड। नैरेटिव थोड़ा सिंपल रख सकते थे, क्योंकि ये एक्चुअल में जिस लेवल का उसका नरेशन मतलब स्टोरी वगैरह है, दैट इज लाइक, ये कोई नोलन लेवल का भी बोलने जाओगे तो गलत नहीं बोलूंगा मैं। अरे नहीं, दूसरी बार मर रहा हूँ। इनको सीज नहीं कर पा रहा हूँ ना, सब यहाँ पे सीज मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। द आयरनी। अमेरिका ओवरनाइट फैटालिटी। रिजेक्टेड एपिसोड। ये वाला तो देख लिया था। Entry day plus 86. There's been a change. Hercules and तो वहां से तो आया।
अरे आना evade. Etching, like the one I used to get in here. Okay, क्या यहाँ का? Is this the lock/key the board told me about? The nail reach research site Gamma. Complete the ritual in the astral plane. Just doing my job. एक चाबी हो गया, ऐसे तीन और है, मतलब टोटल 4 है. First one down. Director Faden's got this covered. Charged service weapon form fires powerful explosive payload that is extremely dangerous. जी अपने बंदे आ भी गए इधर. बात है एकदम फास्ट है, फास्ट.
तुम फास्ट है एकदम बंदे. 100% to shield rust damage. Energy will recover while shield is active. तो और 4 6 ले लाइंस वो किसी ने अगर कॉन्स्टेंटाइन का टीवी सीरीज वगैरह देखा है या इवन डाविंची कोड वाला वो मूवी में भी है ले लाइंस वाला सीन. हाँ, ले लाइंस के थ्रू मैजिक जाता है ऐसा सब कुछ था. इसमें क्या है देखना पड़ेगा. ऑन ले लाइंस एंड देयर एनर्जीज फॉर ऑल माय रिसर्च इनटू द oldest houses ley lines, I still don't understand why they converge here at the base of this pillar. I suppose the simplest reason is that they have to converge somewhere, Occam's razor and all that, but that seems wrong. The esoteric world abhors coincidence. So what is the true relationship between this pillar and the ley lines? Does it act as a magnet attracting them polar north, or is the pillar a product of their focused energies, a sprout nourished by the constant flow of the oldest house's power? Perhaps classifying that power would provide some insight. However, we currently have no means of measuring, quantifying. On that note, Northmoor is bringing in the much lauded Dr. Gustav Wagner from headquarters in DC to aid my research. I suppose this is his way of saying he doesn't trust me to work unsupervised. Let's just hope Dr. Wagner. Okay, ठीक है. और कुछ नहीं. मिशंस में कोई चेंज. रीच रिसर्च साइट गैमा. एस्ट्रल प्लेन चैलेंज वाला एक हो गया है. रिसर्च साइट गैमा चलते हैं फिर. और क्या यहाँ से भी एक. अरे एली यहाँ पे आ गई. Jesse, hey. एमिली सॉरी एली बोल रहा हूँ. What are you doing down here, Emily? What do you mean? You called me down, remember? I'm pretty sure I didn't. No, that's right. You didn't. But then, I remember you needing me to come here. I mean, you even told me how to get in. Yeah. Let's just chalk it up to synchronicity so we can get to work. She takes everything in stride. The board called me down here to deal with the situation. The astral plane is colliding with our world. I know. Isn't it fascinating? I never even considered that the astral plane could be a physical volume expanding beyond its dimensional container. The bleed is localized to this area, but its growth rate seems steady. Given time, it will consume the entire Bureau, and possibly beyond. That's what I'm here to stop. The board told me to fix the nail over there by dismantling 4 locks in the astral plane. Funny, I think it's put itself back together a bit. So that could be due to the law of inverse exchange. For every associated component you remove, this nail reconstructs. Or possibly some variation of anti-sympathy. Don't worry, I'll look into it. Did you notice all the Bureau infrastructure? It looks like there was a research team stationed down here at some point. Do you think Darwin knew about this? I put money on it. That reminds me, have you seen Marshall? She contacted me over the hotline, but then I saw her walking around. I haven't seen her. The hotline only connects to extraplanar entities. Or dead people. But Marshall's proved time and time again that she's a survivor. That's exactly what I thought. Anyway, I've जो वो सोच रही है वो एमिली भी सोच रही है. Have you noticed how they insist on maintaining a certain form? Maybe some sort of a state memory, or they consciously prefer a certain shape. I think we're on a clock here, Emily. I need to stop the astral bleeding before it brings the oldest house down. See what you can find out from the nail in the meantime. And send out some rangers to look for Marshall. She may be in trouble. Will do, Jesse. If you see anything interesting, remember to take detailed notes. Somehow Emily के साथ all the tests
tests I run on the nail keep coming back as nonsense. कुछ A तो couple of my instruments. हुआ The है. Rangers have tapped into an old radio network they found around the Foundation. So if you need backup, just जो call them at one जैसी of ने the सोचा stations. सब already एमिली ने भी सोच लिया है. It is kind of like that. How did the hiss get into the Foundation? Same way we did, I imagine. But you need to remember that the hiss are the embodiment of persistence. Their nature seems to be one of force, to find every possible vulnerability and exploit it. Their only goal is consumption. I'm sure there's plenty of goodies for them down here. The nail, for instance. If the hiss could corrupt the nail, I'm sure they would have by now. It must not interest them in its broken state. They could be distracted by the numerous unknown paranatural materials I'm sure are lying around. These are the roots of the oldest house. The hiss will find plenty of ways to make trouble. They're pretty good at that. So you've never heard of the Foundation, huh? I've never even seen the name referenced. Clearly it's highly classified, but for what reason? The problem with these kinds of closed-off hidden areas is that they were likely sealed for good reason. But now no one is left to tell us what that reason was. Any guesses why the Bureau would hide something like this? I only know what I've observed. This place is spatially rigid, which means it doesn't shift like the rest of the oldest house. And before you ask why that is, I have to admit that I'm clueless. There's some signal interfering with my equipment, making it hard to get a clear reading. It's being emitted from the floor. Maybe I should have brought a jackhammer. The astral plane is already taking chunks out of this place, Emily. Let's not add to it. So let me get this straight. The astral plane is bleeding into the Foundation. Correct. And that's happening because the nail is damaged. I'd say it's a bit more than damaged, but yes, that is my understanding. So what's the connection between the nail and the astral plane? It's a good question. See, I always pictured objects of power as strings between our plane and the astral. If the nail has a similar relationship, then maybe it's more accurate to think of it like plumbing. Now that the nail is busted, sewage is gushing everywhere. Not the prettiest metaphor. So let me get this straight. The astral plane is bleeding into the Foundation. Correct. And that's happening because the nail is damaged. I'd say it's a bit more than damaged, but yes, that is my understanding. So what's the connection between the nail and the astral plane? It's a good question. See, I always pictured objects of power as strings between our plane and the astral. If the nail has a similar relationship, then maybe it's more accurate to think of it like plumbing. Now that the nail is busted, sewage is gushing everywhere. Not the prettiest metaphor. I should get back out there. Agreed. The astral bleed won't stop itself. We've got this area covered, Director. Warehouse. ऊपर कैसे चढ़ूं? ये बाद में शायद थोड़े ओपन होंगे ये क्रिस्टल जो भी है। हाँ
केव सिस्टम में जाके अपने वो रिसर्च गामा में चलते हैं, उधर कंप्लीट करते हैं ना जो भी मिशन है। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा ना। Evade ammo refund. अच्छा, नीचे गिरे तो यहाँ पे वो वापस भेज रहा है, सनी की मार ही दिया पूरा। ठीक है, चलेगा। कुछ तो था, ये फटा, थोड़ा खून जैसा निकला, सफेद हुआ वो। My life's been a strange one. Certainly stranger. It's something else. Worst I've ever seen. I snuck into the Foundation through a back door, I know. Had to get ahead of the hiss. Just a matter of bypassing the ritual protections. Luckily, the board's as distracted as the rest of the Bureau. I had to put on a brave face up there. But the situation is the worst I've ever seen. We're getting back on our feet, but we've already lost so much. Trench is dead. Darling is somewhere. I'm the only one left. But I still have a job to do. Keep the hiss back. There's not enough HRAs to spare, so I'll have to make do with what I've got. Frankly, I don't even know what will happen if the hiss take the nail. Trench made it sound like it could be the end of the world. He was never one to exaggerate. Well, orders are orders, even if they come from a dead man. ज़्यादा बात नहीं कर पाता बिकॉज ये सुनना पड़ता है, मुझे खुद को भी नहीं समझेगा, क्योंकि गेम थोड़ा सा तुम्हें मजबूर करता है कि अगर जानना है तो फिर देखो, पढ़ो। फेडन राइड्स एलिवेटर, इसमें हाफ फेडन का फेस है और हाफ एलन वेक का फेस ऐसे किया हुआ, एकदम स्प्लिट वाला।
तो हो सकता है जिनको ऐसे टाइप के गेम्स पसंद आते हैं, मतलब इसमें नरेटिवली भी बहुत सुपीरियर है, मतलब ये मूवी वगैरह में देखोगे शायद हो सकता है मूवी में ज़्यादा पसंद आए, आई डोंट नो। गेम में मैं भी खुद खेलोगे तो ज़्यादा पसंद आए। देखने में क्योंकि लंबा तो है, ये गेम काफ़ी लंबा जाता है। Is take the nail. End of the world. So I can't let the hiss take the nail. Not a सही problem. बात। I know how to handle them. राम राम सर, राम राम शिंजो, वेलकम टू स्ट्रीम। अरे 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 ये तो बहुत दिमाग खराब करता है। कौन है? अरे नहीं 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 नहीं, भागते रहो। वेलकम टू द स्ट्रीम शिंजो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। एनर्जी रिकवरी, एनर्जी रिकवरी ये तो नहीं चाहिए। क्या है ये एनर्जी रिकवरी? ये 35%, ये 40%। इसको हटाता हूँ। एनर्जी रिकवरी मेरे पास कितनी है? 42% ऑलरेडी है, ठीक है चलेगा। इसको क्लेम कर लेते हैं। क्लेम कर लिया। इधर से ही तो रास्ता है ना? अच्छा जाने के लिए है ही नहीं, गलत बात। तो मुझे जाना पड़ेगा इस साइड से। और भी ऊपर जा सकता हूँ क्या मैं? जा सकता हूँ, रिस्क नहीं लेना फालतू का, फिर गिर जाऊंगा, फिर अलग पंगे। शिंजो पहले मैं बोलूंगा थोड़े चिल गेम्स खेलो, हाथ के दर्द वगैरह होंगे वो तो मुझे पता है। अरे 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 क्या बात है, इसको पता भी है सीधा इक्विपमेंट से भेजना है रेंजर्स को। अरे रेंजर आ गया तुरंत। अच्छा रेंजर मेरे मदद के लिए है, क्या बात है। हाय
वो हेल्थ दे दो पहले। गया। कहीं जगह पे वो गीजर जैसे है, फटेंगे, डैमेज भी देते हैं, हल्का डैमेज देते हैं, बट फिर भी की लेना फालतू का हल्का डैमेज। सिमिलर टाइप के 20 है या 10 है। मॉड्स सेम टाइप का है, ये सेम टाइप का है। हाँ वही ट्राई करता हूँ। वैसे भी अब मैं 19 के बाद ही गेम्स खेल पाऊंगा। ओके भाई जब भी खेलो तो क्या होगा ना, अभी नया नया खेल रहे हो तो हाथ में वो बैठा नहीं है बिल्कुल भी, एंड थोड़े स्ट्रेचिंग वगैरह, उंगली की स्ट्रेचिंग भी करके रखो कभी भी खेल वेल रहे हो ना, तो थोड़े ऐसे ऐसे स्ट्रेच वेच करते रहना, हाथ वार्म अप वगैरह करते रहना। हाथ ठंडे रहेंगे और तुरंत खेलना चालू कर दिया, और फाइनल जैसा गेम है, फाइनल्स में लगता है कंटिन्यूअसली माउस पे लगता है, इस पे लगता है, वो ये बटन दबाओ वो बटन दबाओ, तो ब्रेन अभी तक उतना ये नहीं हुआ है ना, मैं मसल मेमोरी उसकी डेवलप नहीं हुई है। फिर माउस पे कुछ कीबोर्ड के फंक्शनैलिटी माउस पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कुछ बटन्स दबाने हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ पे मैं इससे भी कर सकता हूँ, माउस की ज़रूरत नहीं है, और इससे भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे को कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये वापस मेरे को लेके जाएगा क्या एस्ट्रल प्लेन में? फॉर्मर से हमारी फाइट तो हुई थी। Okay, it's jolly good, but 2 whole lollipops are left to. Hello? Board, are you there? Ninja director board broken, deeper understand. Tool, other new forbidden board. Given farmer yours necessary. Go. Okay, what the hell is going on? Wait, I'm back here? Wasn't my idea. Blame the eyeball. Former. Yeah, we've had our differences. But it is giving me something you won't. Spans crystal grow. अच्छा
इसके लिए कुछ कुछ जगह पे अटका हुआ था। वैसे अब मैं ओके। हाँ, क्या एग्जाम है क्या 19 तक, ऐसा कुछ है? क्रिस्टल्स तोड़ने का भी ऑप्शन है। तोड़ भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। सब कुछ है। फॉर्मर अभी बंधु बन गया क्या हमारा? मर गए सब। पहुंच गया। दो मेरे हो गए तो दो कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरा ये DLC वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। I'm getting pretty tired of being jerked around the astral plane. सही बात है। If you're listening, I want some answers. फॉर्मर से फाइट वाइट होगा क्या? ये बातचीत होगी। 19 को हाउस वार्मिंग है। अच्छा अच्छा। अलोन लॉन्ग विजिटर हैप्पी ओपन ग्रेटफुल। भागते रहो ऐसे चलेगा क्या? नहीं, इधर खत्म हो जाएगा ना। ओके। Hi there. It was nice of you to give me something the board wouldn't. What are you getting out of it? Nothing. Egress. So I'm just supposed to believe you're a particularly charitable, बातचीत होगी, मेरे को लगा ही था। Neither both hungry. Hungry? I mean, yeah, actually, I'd love a sandwich or something. That's not what you meant, was it? Panini Farmer Board Avalon. Are you part of the board? Or used to be? One split board blame. Okay. So you split because the board blamed you for... Side beyond nail rescue house sun warning. Gotta be easier to play charades. Do I need to rescue someone? No. I don't know what I expected. Listen, this has been great, but I have to go. Thanks for your help, and stay out of trouble. House listen, nail leech burn, go. What was Former trying to tell me about the board? Should I trust either of them? यही तो कांड है। ऐसा सिचुएशन में रखा है कि किसको ट्रस्ट करो किसको ना ट्रस्ट करो। और ये चीज एज अ मूवी और ऐसे ये सब सही लगता है।
फाइंड आउट करो कौन अच्छा है कौन गलत है कौन सही है। फाउंडेशन बेस कैंप वॉर हाउस पाउथ। अच्छा हाँ 2 अभी मेरे पाथ्स ओपन हो गए ना। अरे फिर से इतना मेरे को जाना पड़ेगा क्या? क्रॉसरोड्स अच्छा नहीं यहाँ से इजी है ना, ये लेफ्ट में ही है। ठीक है पास में ज़्यादा दूर नहीं आना है। एमिली से बात करने की जरूरत है, एक बार करके देखते हैं एमिली क्या बोलती है। एमिली को मार दिया तो पता नहीं क्या होगा। If it isn't my favorite director. The Rangers found a section of the containment sector in the caves, but no house shifts occur down here. Strange. ठीक है। I should get back out there. The astral bleed one. Don't be a stranger. एक काम करता हूँ डिनर करने के बाद फाउंडेशन कंप्लीट करता हूँ। कल एलन वेक वाला जो DLC है वो कंप्लीट कर लूँगा एंड फिर मूव ऑन करेंगे हम लोग एपेक्स की तरफ। %100% शील्ड रश डैमेज, शील्ड स्ट्रेंथ। Remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we got. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. 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 Late nights, long fights, it felt right.
we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, no pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right,
we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. 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 It's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out,
days we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now. I remember everything and how careless we could be. 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 How careless we could be. It's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything. And how careless we got. It's too late now. I remember you and me. And how careless we. It's too late now, I remember everything and how careless we could be. 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 Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends
weekends and weekdays we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends
weekends and weekdays we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. 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 Too late now. I remember you and me. And how careless we could be. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. We
weekends and weekdays we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now. I remember everything and how careless we could be. 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 But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now. I remember you and me. How careless we. It's too late now. I remember everything and how careless we could be. 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 Okay, I am back. एंड आज फाउंडेशन डीएलसी को कंप्लीट करते हैं और कल हमारा AWE ऑल्टर्ड वर्ल्ड एक्सपेंशन या फिर
एलन वेक एक्सपेंशन, वो कल कंप्लीट करके तुरंत हम लोग एपेक्स शुरू कर देंगे। इसमें हमारा 50% काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। एक मे भी उसके बाद फाइनल फाइट उसका रहे, ऐसा कुछ करने वाले की नहीं, पता नहीं। यूजुअली डीएलसीज उतने टफ नहीं रहते, बट मैं होराइजन जीरो डॉन का खेला मैंने डीएलसी, उसमें तो भाई डीएलसी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा हाँ, ये वेयरहाउस एक था। कौन सा भी मैं यूज़ करता ना। फाइट होगा इधर, देख के तो वही लग रहा है। एकदम शांति, अचानक से शांति। कंप्लीट द रिचुअल, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो? इधर कोई बॉक्स कलेक्टेबल कुछ भी नहीं है, नथिंग। मीली इसका ऑलमोस्ट यूजलेस ही लगा मेरे को। मीली ज़्यादा तो मैं किया ही नहीं, मैंने बहुत कम यूज़ किया। रेंजर की हेल्प मिलेगी। This is the director. I need a ranger at this location immediately. कि फाइट होने वाला है। आ गया। Reinforcements are here. Reinforcements नहीं है ये। इसको क्लेम कर लेते हैं। डिप्लॉयड रेंजर। कंस्ट्रक्ट स्पिन, इसको अपग्रेड कर लेते हैं। पियर्स की वजह से पियर्स भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है, कर लेता हूँ। क्या है इसमें, क्या है बोला इसमें? कंप्लीट द रिचुअल कंप्लीट करना है। हिस्ट्री ऑफ द ओल्डेस्ट हाउस, ये तो पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, इम्पोर्टेंट है। The oldest house has revealed much to me during my months in the foundation, but many questions remain. Primarily, the tree etchings bewilder me. What is their significance? If the house has changed shape over its lifetime, as I have theorized, then was a tree its first form? I sent a team to the Schwarzman building in search of pre-settlement accounts of Manhattan Island. From those I discovered a single relevant line. And there I found a tree not known to me, the devil twisted within its bark. That line, taken with the fact that certain American cultures believed some trees would offer wisdom and guidance, is indeed interesting.
However, it's hardly firm evidence. And though I am now bound to the oldest house, I remain a man of science. Of course, there are numerous ancient beliefs regarding trees. Yggdrasil, the tree of knowledge, Yaks Imix Che. Some cultures offered blood sacrifices to trees, while others claimed trees endowed chosen individuals with inhuman powers. Do New York City's many murders act as sacrifice for the oldest house? Does the house have a chosen champion? Is it me? By order of NA, Dr. Theodore Ash. Okay. Damage while aiming, damage while aiming. Reload. इसको यूज करके देखूं क्या? इसकी जगह पियर्स ट्राई करता हूँ. इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना चेंज करने को, तुरंत हो जाएगा. इसको थोड़ा जल्दी बुला लिया. ये क्या चीज़ है? इमरजेंसी शावर एंड आई वॉश. हट जा, मेरे हाथ पिलेगा क्या ये? On the pyramid and geometry, I have been going through my library researching pyramids and triangles. If that shape does relate to the board as not more says, then perhaps our predecessors in the occult can offer some insight through their geometric knowledge. In esotericism, the triangle is closely associated with the Holy Trinity and other three-part concepts: past, present, future, mind, body, spirit. Interestingly, the term board also implies multiple parts. Upright triangles in Judeo-Christian imagery indicate ascent into the rational divine realm. Inverted, it signifies a descent into the corporeal human. Naturally, the ascent is masculine and the fall is feminine, Adam and Eve. That's just a bit of old world patriarchy. It's 1964 now and we are well past that silliness. क्या बात कर रहा हूँ, 1964. Now it's 2024, 60 years. Considering the above, what does the inverted triangle tell us about the board? They are clearly not corporeal or human. Perhaps they wish to be, or they once were. The likeliest answer is simply that theological imagery cannot help us define alien entities. But still, the pyramid seems significant, shapes have power, and clearly so does the board. ये चला तो नहीं जाएगा? मालूम पड़ा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है. Is this a Bureau ID badge? Looks so old. Hope will definitely want to see this. क्रॉसरोड्स मेरे साथ मेरा रेंजर आएगा क्या? मुझे लगा फाइट होने वाला है, फाइट ही नहीं हुआ. Jesse, you're back. So did you find anything noteworthy? The original Bureau expedition down here left so much interesting stuff behind. Like their ID cards. I picked up a weird one. It's pretty old. Oh wow, look at that. Yeah, I found a few ID cards myself. Or more accurately, the Rangers found them for me. Are you starting a collection? I'm going for the whole set. I kid, of course. But I suppose they are sort of like baseball cards.
except for bureau stuff from the 60s. Hey, the one you found is different than mine. It looks like it's a higher clearance level. A rare one, then. Want to keep it, Emily? Yeah, I absolutely do. But I think you should hang on to it for now. High clearance access might come in handy. Sounds like you have something in mind. Guilty. See, I've been going through Dr. Ash's notes, or the ones I can find, anyway. Like Darling, he seemed to enjoy hiding his most relevant research. From what I gather, there is another floor beneath the warehouse with a special lab that requires 5 high-level staff members just to access. Here, take this. It's an old skeleton key. Something else the Rangers found. I give them $5 for every useful trinket they bring me. I'm gonna assume this key is my ticket to that lower floor. And that super secret lab you mentioned. Bingo bango, as Dr. Darling used to say. Look, ये Helldivers एक मिनट cards around the warehouse. If Ash's notes are reliable, and I'm sure they are, then 5 is the magic number. Okay, चलो भाई. अच्छा और भी कुछ है. पहले चैट पढ़ लेता हूँ. ये Helldivers 2 जो गेम है वो कुछ ओवरहाइप्ड लग रहा है मेरे को. तो मैंडलोरियन जैसे आउटफिट्स हैं इसलिए इतना चढ़ा के रखे हैं सब. हाँ अभी बहुत चल रहा है Helldivers. थोड़ा बहुत गेम प्ले देख रहा था, इंटरेस्टिंग है बट वही है थोड़ा टाइम तक खेलेंगे फिर बंद हो जाएगा. फ्री रहेगा तो खेलता, बट फ्री वगैरह तो नहीं है. चलो ये वाला हो गया. हाँ वापस चलते हैं. अपना रेंजर रहेगा कि नहीं पता नहीं. वेयर हाउस वेयर हाउस वेयर हाउस वेयर हाउस वेयर हाउस. Named enemies present a tougher challenge but yield better rewards. अभी इसमें सुपर सीक्रेट लैब भी है. अरे ऊपर ही घूम रहे हो तो ये हमला क्यों नहीं किया मेरे पे? This is the director. I need immediate assistance. तो बोलते बोलते आ रहा है देखो भागते भागते तो गायब हो जाता है. ऊपर घूम रहे हैं वो लोग, अटैक नहीं कर रहे तो तब तक नीचे का ये क्लियर कर लेता हूँ जो भी है. मेरे को दिखाई नहीं था, अभी जैसे ऊपर देखा तो पता चला. अभी सब हाइप पे चल रहा लगता है, मतलब जैसे वो पाल वर्ल्ड वगैरह. बट पाल वर्ल्ड का डेवलपर ने बोला कि हाँ तुम लोग को अलग अलग गेम्स खेलने हैं तो खेलो, अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए. अच्छा अपने वाले का ज़्यादा हेल्थ नहीं गया. ये ऊपर जाने का भी कुछ तो है, वो देख लेते हैं. वैसे मेरा सर क्यों ऊपर जा रहा था इनको मारने के लिए? मेरा सर भी ऊपर ऊपर जा रहा है. ये आई कार्ड है. Weird place to leave an ID card, but okay. ID कार्ड. ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है काफ़ी जगहों पे. आई कार्ड बोलना है, आईडी कार्ड बोलना है. वैसे दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ऐसा कुछ
हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। क्रॉस रोड्स अच्छा हाँ ये वही जगह है, समझा। रेंजर भी आ रहा है, आ जाओ। ऐसे कुछ खास पियर्स का फायदा नहीं है, अपना चार्ज ही बढ़िया है। सोर्स गेन्ड फ्रॉम एलिमेंटल पिकअप। अच्छा ये भी सही है। अच्छा इधर और जाने भी नहीं देगा। ठीक है एक साइड का तो क्लियर हो गया एटलीस्ट। ये मर जाएगा। अपना रेंजर किधर है? रेंजर गायब। कोई दिक्कत नहीं, वापस बुला लूंगा। पीछे का क्लियर कर लेता हूँ। मैसेज रिट्रैक्टेड। इधर भी एक आई कार्ड है। Another ID card for a cartographer. Cartographer. Sleeping well. Per orders, me and my research team have established a permanent examination lab in the Foundation. I basically live down here now, like the obedient head of research Father raised me to be. I spend my days investigating that odd pillar where Northmore found the handgun. The work was ये वाले हैंडगन जो हमारे हाथ में है। But then I discovered numerous non-Aristotelian energy channels converging at its base. Ley lines, dragon roads, Hylogalinian, call them what you want. But this pillar is the crossroads. I started building something. Equal parts talisman and technology. An array that can impose order on the ley junctions. That's the idea at least. We'll see when I'm done. Sure. To work away from the pillar. खत्म नहीं हुआ? I'm not the only one who feels like that thing has eyes. खत्म होगा। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये तो वॉक है। Shifting fragment. It's working. It won't go any higher. I wonder if I can charge it up somehow. इस तरफ जा रहा है ना, एक बार देखता हूँ इस तरफ क्या है। तोड़ने के लिए तो चार्ज से बेस्ट और कुछ है भी नहीं। बस इधर कुछ है भी नहीं, मैप में भी उतना दिखा भी नहीं रहा।
कलेक्टिबल्स के नाम पे। अच्छा ये वाला अभी जो 28 days. मैं डर गया था। Director Faden here. Send backup to my location. आ गया रेंजर वापस। ये डैमेज वाले को ही भेज दिया। अरे कोई हेल्दी रहता उसको भेजते। भाग क्या आएगा। क्या तुम्हारे पास लेविटेशन नहीं है? लेविटेशन फ्लेक्स बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो? आ नहीं रहा है। आ जाओ आ जाओ। आई कार्ड 3 मिल गया है, 2 चाहिए और। ऊपर मिलेगा? बैटरी की बैटरी। अच्छा काम करने वाला बैटरी चाहिए। और भी ऊपर जाएंगे हम। हर एक जगह से बैटरी निकाला हुआ है। हाँ क्या है इधर? आई कार्ड। Entry day plus 51. Northmore has ordered an all-hands search for objects similar to the service weapon. He claims there are more in the house, though I don't see how he's so certain. He's been strange lately, talking about joining greater causes, and frequently mentioning the pyramid. After pressing him, he finally described this pyramid to me. Inverted, black, mathematically perfect. Oddly enough, Adam and the other id have shown me numerous inverted triangles painted on the cave walls. Surely there's a connection, but I don't see it yet. As far as occult symbols go, triangles are by no means rare. Flood, Levi, Kroll, they used that shape like it was going out of fashion. Standing on their base, triangles signify stability and strength. Inverted on their points, they represent conflict and stagnation. Of course, the orientation is just a matter of perspective. Looking at the pyramid from below gives you one, from above another. Northmore says he looks up at the inverted pyramid. I have to wonder, is anyone standing over it, looking down? ईयर्ड और ऐश हमें मिलेगा क्या? हिस्से करप्टेड। रेंजर क्या ही करता है, यहाँ तक तो कुछ कर भी नहीं पाता इधर आने के लिए।
मल्टीमीडिया लेकिन मैंने कहीं पे मिस कर दिया क्योंकि लॉग 1 2 3 5 6 4 गायब है किधर बीच में मैंने 4 कहीं पे स्किप हो गया है मेरा। अच्छा अगर तोड़ा है तो उसको वापस मैं बुला भी सकता हूँ मतलब काइंड ऑफ। लगा ही था। यहाँ से नीचे नीचे तो नहीं जाना है नहीं ना। Who should I be listening to? Weird entity A or B? Or neither? Let's just stay the course for now. The Bureau's in danger. We know we need to repair the nail. The astral plane won't break reality on my watch. ऊपर कुछ दिख रहा है। मीटियर सप्लीमेंट और भी ऊपर जाएगा क्या? अच्छा ऐसे भी जा सकते हैं।
बहुत ध्यान देना पड़ता है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे सब देखो एकदम। सो अकॉर्डिंग टू दिस गेम ये सब जगह FBI ऑफिस के अंडरग्राउंड में है। नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस गेम FBI इज डिफरेंट, विच वी सॉ सागा एंडरसन FBI की मेंबर थी, एलेक्स केसी FBI का मेंबर था, बट दिस गेम इज और वहाँ पे एंड में अगर ध्यान दिया होगा जब एलन वेक को पकड़ने के लिए, मतलब कुछ कल्ट ऑफ द ट्री के बंदे आते हैं उसको मारने के लिए, तब आती है FBC। तो ये FBC वो दिखा रहे हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट हाउस। एंड ओल्डेस्ट हाउस का सीन ये है कि वो किसी को भी दिखता नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो खुद अगर नहीं चाहता है, या फिर इसके पास एक एंटिटी है पोलारिस करके, वो हेल्प करती है। अरे कैसे, ये वाला नहीं मरना चाहिए था। तो इनके पास ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर होते हैं, ऑल्टर्ड आइटम्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर सिर्फ डायरेक्टर ऑफ द FBC ही कर सकता। भैया डायरेक्टर कैसे बनी, क्या बनी ना, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। थोड़ा बहुत ये दिया हुआ है कि इसके पास वो पोलारिस था साथ में, तो वो हेल्प कर रहा था, एंड उसको बचपन से मिला हुआ था। हो गया। चलो कहाँ जाना है? यहाँ से भी एंटर मार सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से पहले चलते हैं और अंदर का क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं। फाउंडेशन एचिंग्स, क्या फुल हो गया? अब भी क्लियर कर देते हैं। से ये वाले सब फालतू ही हैं, तो ये वाले तो कर लेता हूँ डिकंस्ट्रक्ट।
energy cost. Explosive energy recovery. आ रहा है यहाँ पे है, रेड रेड दिख रहा है, मतलब है। बट ऊपर जाने के लिए केव्स वगैरह से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाते हैं फिर। इतना दूर जा पाऊंगा क्या? आई थिंक मेरे पास कुछ रहेगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था, इतना दूर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हो जाएगा वेड के साथ। यहाँ पे और कुछ नहीं लग रहा, यही लास्ट है, आखिरी। हाँ, वाओ, नाइस। अपर वेयरहाउस, एलिवेटर, मशीन रूम। अच्छा, इधर भी है। मेरे को नहीं पता था कि ये सब फटेगा, मतलब फट के मेरे को डैमेज भी पड़ेगा। चेंज वेलोसिटी बूस्ट, चार्ज वेलोसिटी बूस्ट। अच्छा, चेंज नहीं है। मुझे अभी तक आई कार्ड्स नहीं मिले। अपर वेयरहाउस, और एक फ्लोर ऊपर है। हेल्थ मेरा बहुत कम है। The etching. लेवल डिजाइन तो नेक्स्ट लेवल है।
लगा ही था ऐसा कुछ होगा, लगा ही था। बट अभी मेरे को नहीं लगता उतना इशू होगा। कौन सा भी एक में, हाँ यहाँ से जा सकता हूँ डायरेक्ट। ऊपर से आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तीन मिल चुके हैं और अच्छा वो अलग है। और ये वेयर हाउस में ही होने वाला है। अच्छा, अगर मैं मिड लेवल ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा, ये सही है। Recent confrontation, yelling was an error. We decided to determine that you may have both tools or upgrades. Only because you are the favorite current director. But do not listen or speak to former. You are welcome. Grateful. Wow. अब क्या हो गया?
अच्छा 3 जगह पे है। They sure changed their tune all of a sudden. तीन हो गए, एक बाकी है। I'm overthinking this whole board former thing. They can sort out their own business so long as it doesn't get in my way. Obsessing over these problems is something Trench would do, but I've got my intuition. And you. ओके, इसने भी अपने ट्यून्स बदल लिए। इधर कुछ भी नहीं है। टनल क्विक एक्सेस। एमिली का एक 2 आईडीज चाहिए। अरे बाप रे, पहले वाले में उसने बहुत डैमेज दे दिया, बहुत ज्यादा ही। ये मैं कहाँ पे आया हूँ? यही वाले से आया था ना मैं। हाँ यही वाला था।
वो सीनियर अधिकारी किधर है? इधर कुछ है क्या? मेरे को दिखा तो नहीं कुछ भी। यहाँ से गया तो था मैं, फिर भी ये रेड रेड अभी बचे हुए थे। मुझे लगा यहाँ से गया ही नहीं मैं। Anyway, 2 और आई कार्ड्स चाहिए मुझे। एबिलिटीज 4 मिले हैं। और 4 लेके ये कर लेता हूँ। वो 3 चीज़ें एक साथ उठा सकता हो, वो बढ़िया रहेगा फिर। अच्छा, ये तो ऑडियो है। वेड एमो रिफंड। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम हटाने के लिए का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, देखना पड़ेगा उनका क्या दलीलें दी है हटाने के लिए। चलो नीचे चलते हैं। इधर है लिफ्ट, ऊपर से आएगा ये लिफ्ट। इतना टाइम में 5 बज रहे हैं। वैसे 60s का टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ये लोग, इंस्टॉल्ड है 60s का टेक्नोलॉजी। नीचे से ऊपर से आना चाहिए था, ऊपर था ये। अच्छा, 3rd फ्लोर टनल एक्सेस पे हूँ। पावर कोर स्टोरेज पे एक बार चेक करके फिर नीचे वाले इस पर जाता हूँ। और एक आई थिंक जगह था जहाँ पे जाना था, वहाँ से आई थिंक नीचे जाना रहेगा। देखते हैं। यहाँ पे क्रोबार है बट क्रोबार यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूरत भी नहीं है वैसे क्रोबार यूज़ करने की। कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा। वेयर हाउस एंट्रेंस।
अभी सिर्फ आई कार्ड वाला वो मिशन है और एक ही की वाला वो बाकी है। बाकी मेजॉरिटी तो हमने सब कुछ कर लिया। ये भी हम लोग ने चेक कर लिया था। ये भी इनफैक्ट हम लोग ने देख तो लिया था। हाँ ये वाला भी देख लिया था। इधर कुछ भी नहीं है, डेड एंड है। इधर से रेंजर को बुलाता हूँ, देखता वही। Send a ranger to my position. पूरे हेल्थ वाला मिला ना इस बार? हाँ पूरे हेल्थ वाला ही है, हाफ हेल्थ वाला नहीं है। ऊपर तो कोई उड़ नहीं रहा ना? नहीं। Another one of those ID cards. Security chief. Request denied. Machine for the ridiculous sand research project. However, it's also very sure. Apparently, you want a lightweight 1 or 2 man military grade helicopter for the purpose of surveying the vast expanse of columns by air. I bet you didn't even stop to wonder how much time, money, effort, and blood this toy would cost us. Well, no, sir. I'm sorry, but I will not subject my men to another month of marching through that death trap upstairs. For Christ's sake, these people have families, not that they ever get to see them anymore. Request denied. Lewis McNary. एक और आई कार्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ से नहीं मिला, ऊपर नीचे कहीं जाना है या फिर क्या सिनेरियो है इसका? अच्छा इधर पावर्स गन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा। Reinforcements are here. अच्छा हुआ। ओए अरे नहीं 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 नहीं, हो गया ना क्लियर। रीइंफोर्समेंट ने हेल्प किया भाई, अच्छी खासी हेल्प गई रीइंफोर्समेंट की भी।
एक हमें मिला था, दूसरा एमिली ने दिया, तीसरा हाँ ऊपर जाते वक्त शायद मिला था कहीं पे। ये सब चेक कर तो चुका हूँ, बट ये प्रॉब्लम होता है ना एक साथ, मतलब एक नहीं मिलता फिर उसके लिए ढूंढते रहो। यहाँ पे एक मिला था हाँ, और नीचे जाते वक्त एक मिला। इधर फिर भी एक बार देख लेता हूँ, वैसे तो नहीं मिलेगा, फिर भी बोल नहीं सकते इनका। अकेला ही है। सारे फ्लोर्स में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ने चेक तो कर लिया था। अरे वापस needed to access. यहाँ पे एक मिला था हमें।
अच्छा बाप रे ID card was for an excavation engineer. Why did so many people abandon their cards down here? खतरनाक खतरनाक जगहों पे रखा था इन्होंने। सोच भी सकते थे कि यहाँ से ऐसे चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लेविटेशन भी यूज करना है, वो उसको बाहर निकालना है, उसके ऊपर रख के ऊपर ऊपर जा जाके। बाप रे, कितना सोचने पे मजबूर करवा दिया इन्होंने। एक एक चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। नोट पर archival mandates 8.a this document has been edited to meet our current event summary पढ़ते हैं। This paradimensional occurrence consisted of 3 sequential sinkholes induced by subterranean implosions revealing foreign material of magmatic qualities। ठीक है, चलो बात हो गया। ये कौन सा फ्लोर था? मेरे को ज्यादा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। चलो हो गया। ब्रा क्या हुआ? भाई वापस हमला नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो अरे कितने बार आएगा भाई? जा लड़, मेरे लिए लड़। जा 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 लड़ 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 लड़। सिर्फ टेलीपोर्ट ही करेंगे क्या? Finally.
चलो एक्सेस फाउंडेशन टू द वेयरहाउस। इतना ऊपर आईडी, हाँ आईडीज बहुत इसे छुपा छुपा के रखे उन्होंने। From the layer of dust on this place, nobody's swept here in years. Not even Ati. No way he'd stand for this. अरे भाई। There's an elevator, which I'm sure is super safe, and a space in each terminal for an ID card. But which card goes where? ये किसका कार्ड हो सकता है? ये इन्वर्टेड क्यों लिखा हुआ है? 2 टर्मिनल्स इधर हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांच अलग अलग पर्सन के 5 अलग अलग आई कार्ड डालने पड़ेंगे। सिक्योरिटी चीफ शायद यहाँ पे रहेगा एंट्रेंस में। साइंस का ऐसा लग रहा है कुछ। फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल। हेड ऑफ रिसर्च में भी नहीं। सिक्योरिटी चीफ यहाँ पे है, गन्स वगैरह उधर ही दिख रहे हैं मुझे। हैंक श्रेडर, हैंक श्रेडर ही है ना? गन्स वगैरह इसके पास है। सिक्योरिटी चीफ, सिगरेट फूकने वाला। डोंट टच, ये कार्टोग्राफर डेफिनेटली। ये एक्सकवेशन वाला कोई है। फाइनली ये रहेगा फिर फिजिसिस्ट। नहीं, ये ऑलरेडी मैंने हेड ऑफ रिसर्च का दे दिया, तो फिर ये फिजिसिस्ट रहना चाहिए, नहीं तो उल्टा दोनों में से एक। तो ये फिजिसिस्ट है कि Physicist would probably have instruments or something for physics. हाँ ये करेक्ट है। It worked. Now I just have to get on a rickety elevator that goes who knows how far down. अपने क्लूज यहाँ पे ये फिजिसिस्ट ये सब यूज करेगा, वहाँ पे गन रहेगा तो सिक्योरिटी। अब क्या है? अच्छा हाँ बेसमेंट। ऊपर वाले सब हम लोग ने एक्सेस करके सब कर लिए। अभी बेसमेंट में जाके होने वाली है तगड़ी लड़ाई शायद। Still, this lab's way tinier than any of Darling's. Shield boost. Find Dr. Ash's notes. ये क्यों किया और क्या हुआ उससे कुछ पता भी नहीं चला। Why would they need such a heavy door down here?
भाई डर गया था मैं, वो अचानक से ऐसा आता है और वो ऐसे ही बहुत डेंजर है, ऊपर से ये अभी लेजर भी छोड़ रहा है। Hello, Weirdo, welcome to the stream. ऐसी बहुत डेंजर है वो ऑलरेडी, उसके बाद भी एबिलिटीज फिर किसी और चीज के लिए लगाओ क्या? 100% शील्ड रश डैमेज, ये ले लेता हूँ फिर। शील्ड स्ट्रेंथ ये वाली रहनी चाहिए थी, थोड़ा और हेल्प मिल जाता। चलो कोई ना। कैसे हो वियर्डो? चलो भैया चलिए अंदर। ये पजल तो पहले समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँगा, क्योंकि इनका इतना इजी यूजुअली देते नहीं है। दे दिया थोड़ा इजी दे दिया, सामने वहाँ पे मटेरियल से डाल दिया कि भाई ये तो ये रहेगा, वो तो वो रहेगा। इधर है। जा 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 जा, इसको चार्ज से नहीं मार सकता मैं। अरे है किधर भाई? कुछ डैमेज पड़ा कि नहीं इसको?
This looks like the nail. Only, I mean, a document. Is this in some kind of code? Can't read a word of it. I should take this back to Emily and tell her I got into Ash's secret lab. हेलो, वॉइस आया, वॉइस आ गया। इन गेम साउंड आएगा क्या, बताना मुझे। इन गेम साउंड आ रहा है क्या ये फ्रीज होने के बाद? ये एक पंगा है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा भी अगर हैवी हुआ ना गेम तो फिर ये फेस कैम फ्रीज और ये सब होने लग जाता है, चाहे वो मल्टीप्लेयर हो या ये हो स्टोरी वाला। मल्टीप्लेयर उतना नहीं होता, फाइनल्स के टाइम पे होता था। फाइनल्स थोड़ा सीपीयू जीपीयू दोनों हैवी है। वो जुगाड़ लगानी होगी, जुगाड़ लगानी होगी। किसकी बात कर रहे हो वियर्डो? अभी कर रहे हो क्या स्ट्रीम? मैं ये सोचा था ये वाला कंप्लीट करके फिर कल मेरा एक ही डीएलसी सेक्शन बाकी रहेगा, एलन वेक वाला, वो करके फिर एपेक्स उसके बाद ही शुरू कर दूंगा। देखेंगे नया क्या आने वाला है, मतलब नया क्या है, मतलब अच्छा क्या किया उन्होंने उसमें। मोबाइल पे जो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी वो ज़रूरी नहीं ना कि पीसी पे भी अच्छी लगे। उड़ाई दिया इनके एक कप। I found Ash's secret lab. Excellent. Please tell me everything. Spare no details. ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है। There was another cave. The walls were covered in paintings of eyeballs. The research seemed dedicated to studying a kind of smaller version of the nail. It looked like the same material as the one up here, but just a different shape. Well, are you sure you didn't see any functioning prototypes? Or at least some schematics? I mean, Dr. Ash was a very accomplished engineer. None. Sorry. I did find this handwritten note. Wow. Ash had terrible handwriting. Never meet your heroes, right? That looks like a transcribed conversation between Ash and someone named F. F? Ooh. Oh, this is juicy. This'll take me days to parse out. Maybe weeks.
thought about taking a vacation, Emily? Are you kidding? This is my vacation, Jesse. The nail is almost repaired. You really do have a knack for this kind of work. Any progress with the nail? एक blast बाकी है बस. I've been busy with surface analysis. Its composition is remarkably similar to that of material found in the astral plane, but it alters itself between my observations. It's almost as if it doesn't like being examined. So the nail is from the astral plane? Not necessarily. See, if we assume that, we're suddenly facing a lot of new questions. How did something so large get out of the astral plane? How did it get inside the oldest house? Did a threshold bring it in? Did people? Maybe through the motel. Maybe it was always here. Doubtful. Have you spent any time looking into the crystals growing around here? As if I could resist. The biggest question is where it comes from. A threshold? Or is it native to the Foundation? But if so, why doesn't it grow in the rest of the oldest house? The fact that they returned to an earlier state when damaged is severely inconsistent with our reality's adherence to linear time. So either they're A, partially conscious, or B, organic elements that are foreign to and yet influenced by our dimension. The jury's still out. Yeah. Have you learned anything about the crystals? I have a power that lets me stretch them. Huh. Yep. Yep. Any idea what Marshall would be doing down here? That information is on a need-to-know basis, Faden. Sorry, I can resist. But honestly, I never had much interaction with Marshall. She only came to me when she was looking for Darling. But this is Helen Marshall we're talking about, the woman who single-handedly dealt with the Bergen Peak AWE. If she's down here, it's because she needs to be. Well, clearly she couldn't handle this one on her own. I'll see you later, Emily. Take notes. डायरेक्टर को बोल रही है टेक नोट्स. Don't be a stranger. Abilities. Is duration. Energy will recover while shield is active. हाँ, अभी मुझे एक लास्ट कहाँ जाना है? अच्छा हाँ, ये वाला साइड पे. इसके लिए उधर शूट कर पा रहा था. वही सोचो ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे जाने के लिए कुछ तो है. मर गए क्या? अच्छा क्या बात कर रहे हो? चलो हेल्थ आ गया वापस. मेरे को लगा गया इतना जल्दी हेल्थ.
एक और एक जगह पे भी ऐसे ही कुछ था, वो अभी स्ट्रेच करने के बाद मतलब स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो फिर ऐसे सब जगह पे एक्सेस कर पाऊंगा मैं। ठीक है, एक ही बात है। सोरा देखा? हाँ भेजा ना मैंने। यस गेम साउंड इज हो गए, वॉइस आ गया। नहीं आज नहीं कर रहा, आज फ्राइडे है, आई एम आउट। अच्छा हाँ फ्राइडे। सोरा देखा? हाँ अभी तो मतलब खतरनाक सिनेरियो बनने वाला है। वो लास्ट ईयर का जो जिस पर्सन ने वो यूट्यूब पे वीडियो डाला, उसने डाला ना लास्ट ईयर विल स्मिथ ईटिंग अ स्पैगेटी, जो डाला था 3-4 सेकंड का जनरेट होके आया था, वो भी अनरियलिस्टिक। और अभी कितना रियलिस्टिक लग रहा है। बस यही बोला है कि हाँ ये सबसे बेस्ट में से बेस्ट उन्होंने दिए रहेंगे बस। म्यूजिक व्यूजिक चलाया, एक ही बंदा था। इसे अंदर अभी फाइट होने वाला है, अभी तगड़ा फाइट होगा, बड़ा एरिया है। जा भाई जा। ये कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं उसको? गया किस पे गोली चला रहा है वैसे? वो मेरे पे गोली चला रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। अरे अरे ये तो चाहिए ना। कितना है मेरा हेल्थ रिकवरी? 41%, 59%। अरे भैया ये तो चाहिए। है किधर ही है? अरे आपस में लड़ाई कर रहा है। मतलब ये तो मार ही नहीं रहा है, दूसरा वाला ही मार रहा था। आजा मेरे दल में आजा। सोरा देखा? यस। एनर्जी रिन्यूअल। अच्छा वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलेगा। ब्लास्ट रेडियस ऑलरेडी है।
यहाँ का हो गया ना, और कुछ यहाँ पे लॉन्च एमो रिफंड हो गया। रहने दो। यहाँ से नीचे उतरूंगा तो शायद मरूंगा भी नहीं, पता नहीं। वापस लेके आता है एक जगह पे, तो वापस लेके आया था। इधर क्लियर है, कुछ भी लेना नहीं है। This area looks newer. Is it from the upper floors? दूसरा और एक पाथ है क्या? अच्छा, कैनियन रिम के वहां से और एक पाथ है। ये हम लोग वापस ओल्डेस्ट हाउस में तो नहीं आ गए अंदर? ओहो, Something behind that history. और कुछ बाकी है? अच्छा हाँ, यहाँ से आई थिंक जा सकता हूँ मैं। डेटा एंट्री एंड फाइलिंग। यहाँ पे और एक प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे आई थिंक हम लोग ऐसे घूम के जाएंगे। खुलेगा कैसे लेकिन? यहाँ पे कुछ है क्या साइड वेड में? ओके, ये थोड़ा देखना पड़ता है आजू बाजू में कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ से घुस सकते हैं, निकल सकते हैं। whoever finds this, I am containment processes designer John Gibbs. ये रशिया भी जा रहा है। रशिया में क्या हुआ था? A series of reverberating sounds observed in downtown Kyiv with no clear point of origin. The event was witnessed by the city's general public. Mental and physical symptoms were reported, including aphasia, sleep paralysis, and excess in the aphasia. भूल रहा हूँ क्या है वो aphasia, मैं सुना था कहीं पे, भूल गया। Send a ranger out. Director's orders. तुरंत आ गया टेलीपोर्ट। ये भी टेलीपोर्ट से कम नहीं कर रहे हैं ये लोग। इधर फाइट होगा, बोला ना मैंने। तू भी लड़ मेरे लिए।
भी। आजा 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 आजा। हाँ चलो। ओए कौन बचा कौन है? रेंजर बचा हुआ है। खत्म। ट्रॉमा। हाँ जाना किधर है? अरे ये चढ़ कैसे गया? इसके पास कौन सी एबिलिटीज है भाई? वॉशरूम। Someone call a plumber. Thought no one was around to hear that. भाई गिरने वाला था अभी। मेरे को हेल्थ लेके आता हूँ। यहाँ से भी तो आई थिंक जाना है मुझे। तो उधर का क्या सीन है फिर? प्लम्बर वाला। अच्छा ये वॉशरूम सही है। ये कौन सा है? ये लेडीज वॉशरूम। लेडीज वॉशरूम में कोई दिक्कत नहीं है, जेंट्स वॉशरूम में सारी दिक्कत। वॉशरूम के लिए जाएंगे कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में अभी। और मिशन क्या है? बस एक लास्ट बाकी है। चौथा चौथा नेल का चौथा पीस को ठीक करना है। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ क्योंकि यहाँ के वॉशरूम में दिक्कत है।
Mission the nail. Collectibles. Dear House of Representative, my husband read an article before he died about how the universe was really just a computer program. He believed it. I thought it sounded silly, but now I think he was right. Francis was hit by a car a few months ago, a drunk driver. I don't think it was supposed to happen. My neighbor's son Jeremy broke one of our windows with a football a week before Francis died. Francis yelled at Jeremy for it. He was a bit harsh. This is important because I see Jeremy on his computer through their living room window. He's on it all the time. His mother says he's a computer whiz. I think Jeremy is operating the computer program and he changed the universe so that driver would hit Francis. He did it to get back at Francis for yelling at him. Is there a way to change the computer and make Francis come back? I have some money if it's expensive. I don't know how these things work. I don't care if Jeremy gets in trouble or not. I just want Francis to come home. Francis and I were very happy together. I can feel him not being here and I know it's... Yep. बस इतना ही है क्या इसमें? ये नहीं फालतू में. I don't see anything else. अच्छा इधर भी कुछ रहेगा इम्पोर्टेंट. Here लेट नाइट स्ट्रीम. बस ये एक स्ट्रीम बाकी है, वो खत्म. स्ट्रीम बोल रहा हूँ, ये मिशन बाकी है. So let's finish कर लेगा. Welcome to the stream by the way. Thank you so much for joining in. जा सकते हैं उस तरह ऊपर नहीं होगा. Evaluation hall. लास्ट में मेरे को लगता है मार्शल ही मिलेगी हिस्से पूरा. ओके हेल्थ रिकवरी ऑलरेडी 59% है मेरे पे. मतलब इधर भी वॉशरूम. किसका वॉशरूम है? यहाँ पे जेंट्स का दे दिया रहेगा. नहीं वो लेडीज है, ये जेंट्स है. ठीक है रहना दे. मैं सोचा था अपना हेल्थ फुल करवा लेता, बट आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा. कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे पास में रहेगा तो हो जाएगा. पीछे जाके ये करवाने की जरूरत है. फुल हो गया हेल्थ. यहाँ टाइम से नहीं निकला तो फिर वो अलग पंगा है. तो कुछ नहीं है. ये सप्लीमेंट
नहीं चाहिए। क्या गिफ्ट अकाउंट 2 अभी वापस और एक फाइट होगा पक्का। क्या बोलते हो? So that's the altered item. Looks pretty secure. I should hire someone who builds smaller machines. P02 P01 No power. Typical. वापस मुझे जाना पड़ेगा नीचे। Warning. Altered item detected in transport bay. Access is prohibited per safety regulation 18.A. यहाँ पे कुछ चमक रहा है। अच्छा वो उस तरफ शायद ये अपना कंट्रोल पॉइंट है इसके लिए चमक। करना क्या है? Sector lobby C. ये बजा फिर उसने वार्निंग दिया। इसकी भी जरूरत नहीं है। लॉबी सी जा नहीं पा रहा हूँ क्यों? और कुछ है?
और देखो कुछ तो है, बट यहाँ से कैसे जाओ? एक तो अंधेरा पूरा। The last egg breaks now. The hole in your room is a hole in you. You came and you let you in through the hole. You have always slowly followed each other. I'm talking about you. करना क्या है भाई? बटन वगैरह सब तो प्रेस कर दिए मैंने। देखो वाईटी में तो वही करना पड़ेगा। कब से क्या है ये? सेक्टर लॉबी सी यहाँ पे कुछ डालने हैं क्या? सेक्टर पावर still better to do. You are home. Your awareness is home. You've taken your boxes with you. All hierarchies. Under the conceptual reality behind this reality. Those songs radio to everyone. After the song
इतना अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। ट्रांजिट कंट्रोल Hurts to be happy. An earworm is true, you can't stop humming the dream. Baby, 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 yeah. यहाँ पे ऐसे कुछ मिल भी नहीं रहा। So safe and nothing to worry about. Ha ha, funny. The last egg 1 breaks. घंटे का वीडियो है। The hole in your room is a hole in you. You came and we let you in through the hole in you. You have always been here, the only child, a copy of a copy of a copy. Orange peel. The picture is you holding the picture. ये When वाला you पार्ट hear this, you will know you're in WeirdoPlays time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls, yellow, red, and white. Through a mirror, inverted and right. Leave your insides right. Push the fingers through the scissors to the wet. You've always been here in you. You want this to be true. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. This happened 1 सेकंड ना एक मैसेज आया। You gave us the permission and the regulations. We laid in the states. The word that describes this is redacted. The मौज हो गई फिर तो। the name of the sound. It resonates in your house. After the sound of my thoughts, we build you till nothing remains. The egg cracks as the truth will challenge you. You are on home. You remind us of पूरा एक-एक डिटेल में कर रहा है। you've taken your boss with you. All hair must be under the conceptual हर एक चीज पढ़ के you must want these ways सोचा। away. और इसको कितने व्यूज मिले हैं? 42,000 व्यूज मिले हैं। Breaking the first, the second, the third, the fourth wall, the fifth wall. ठीक है, इसने भी वैसे ही चालू किया। How do you say insane? Hurts to be happy. An earworm is true, you can't stop humming the dream. ऊपर आया, ये बटन भी चालू करेगा। So safe and nothing to worry about. Funny. The last egg breaks now. The hole in your room is a hole in you. You came and we let you in through the hole. तो बिना बटन दबा के उस तरफ जा रहा है। The only child, a copy of a copy of a copy. Orange peel. इसको भी सेक्टर लॉबी सी का एक्सेस नहीं है। फिर क्या किया? When you hear this, you'll know you're in WeirdoPlays time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls, yellow, red, and white. Through a mirror, inverted and right. Push the fingers through the scissors to the wet. You've always been पावर नहीं है तो पावर के लिए मुझे इधर एनर्जी पावर्ड कोर्स कहीं तो ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे है क्या कहीं? रूम्स वगैरह हैं। वॉशरूम से पावर मिले।
तरफ तो मेरे को ही लगता स्टार्टिंग में, और इतने दूर यूजुअली रखते नहीं है पावर पोस्ट। पावर चाहिए बेसिकली। आगे देखता हूँ क्या किया था इसने। करना पड़ेगा इनको। क्या सीन है दिखाता हूँ, पहले तो इनको निकालो। क्या ये निकले? इन तीनों में बैटरी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे है पावर कोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा तो फिर इसको निकालो पहले, फिर जाएगा इधर। अंधेरे में कहाँ से दिखेगा? नो वे। सेक्टर सी का एक्सेस अभी तक आया नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है शायद अभी ये बटन दबाते ही। इसको लाइक तो बनता है। जेसी कॉक्स 10.3 लाख सब्सक्राइबर्स। इसका नाम भी जेसी है? जेसी जैसे कोई नहीं। No altered material detected in area. Personnel may now safely enter. Have a Bureau full day. क्या बात कर रहे हो? ओके, अभी वो कहाँ गया? बोला नो अल्टर्ड आइटम डिटेक्टेड, बोल रहा है पर्सनल कैन सेफ्टी एंटर।
This was Sector Lobby C. क्लोज रेंज के फाइट्स रहेंगे तो वही ध्यान रखना है कि कभी भी वो रॉकेट लॉन्चर वाला वो रखना है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी बोल रहे हैं कुछ है प्रश्न चिन्ह के लिए। Properly trained. Guess I pass. I am very properly trained. तो यही वाला बोल रहे हैं प्रश्न चिन्ह पे जाओगे तो वन ऑफ द बेस्ट मिशंस पे खाली एक बॉस से फाइट लेना पड़ेगा। I remember that camera. How the hell did it get out? Are they shooting movies now? क्या हो गया? After that camera and step on it. क्या खत्म नहीं हो गया? क्या बात कर रहे हो? सही है। अरे अभी भी वापस थोड़ी बहुत वो सिमिलर चीजें करनी पड़ेगी।
थर्ड एक्ट विलन। अरे नहीं, वो एक बंदे ने बहुत डैमेज कर दिया। अरे नहीं, पूरा वापस से शुरू। कौन सा था ये? यही वाला था। सही था, लास्ट थर्ड एक्ट विलन उधर वो खत्म कर रहा था बस। ये मतलब कोई मोबाइल गेम जैसा रहता है ना, सबवे सर्फर टाइप्स। और तो वही स्टार्ट कर दो। बेस गेम में नहीं डाला इसको उन्होंने, इस पर डाल दिया। सिंस कैमरा है, सिनेमा के लिए यूज होगा तो उन्होंने उस हिसाब से इसको यूटिलाइज करवाया। अभी एटलीस्ट रूल्स मेरे को काफी हद तक समझ में आ गया, आई होप। वैसे तो ऑलमोस्ट रिकवर हो भी गया था, ऐसा नहीं था कि रिकवर नहीं किया था।
अच्छा दोनों साइड पे है ना ये, दोनों साइड पे ही है। कौन सा भी एक साइड पे जाऊंगा तो पूरी रात गेमिंग। अरे सर अगला दिन आ गया। हाँ आ गया, आ गया। कल मेरा है नहीं लेक्चर, परसों लेना है मुझे डबल टाइम, तो आज ये खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है। देखता हूँ आज अगर लेट भी हुआ तो भी दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो बाय द वे वेलकम टू स्ट्रीम शिंजो। ऐसा लगा सबवे सर्फर चल रहा है कुछ, सबवे सर्फर नहीं बट ऐसे ही टाइप का एंडलेस वो रहते ना गेम्स। अरे क्या है, पीछे धकेल दिया मेरे को। जल्दी आ जाओ विलन। खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। पकड़ना है सेकेंड टाइम दूर से भागेगी। अभी तीसरा एक्ट होने वाला है। चलो सर बाय, मैं तो सोने जा रहा था। ओके ओके बाय बाय, गुड नाइट। अभी आई थिंक थर्ड एक्ट विलन आने वाला है, आई एम नॉट रॉन्ग। गया हेल्थ पूरी नहीं है। पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो। सो गया, थर्ड एक्ट विलन को भी ले लिया। अब आजा वश में।
फाइनल एक मिशन भी बाकी है इसके बाद। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। What? We're back? Did that really just happen? Felt like a dream. Or maybe a bad movie. Maybe a bad movie. Good night. Okay, good night. Jesse Faden starring in Swift platform completed. सही मिशन। तो इधर और कुछ है भी नहीं। ऐसे ऐसी जगहों पे कभी सोच सकते हैं ऐसा अकेले जाना। मतलब इट इज नॉट अबाउट बीइंग स्पूकी एंड ऑल, हॉन्टेड वाला सीन भी नहीं है। इट्स मोर अबाउट अगर मैं यहाँ पे खो गया मेरे को कोई लेने भी नहीं आएगा, ऐसे ही ड्यू टू स्टारवेशन ही मरना पड़ेगा ऐसे कोई अंधेरे जगह पे, बिकॉज आई लॉस्ट माई डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। Movie camera supplement. The item came to the bureau's attention after the hospitalized mailman from Arkansas claimed his injuries had been caused by a movie camera. Further investigating connected. The following is a list of known films believed to have been shot by AI-80. Shoot First, Die Last. Unreleased. Coffee Bullet, Billy's First Car, Bike Hard, Delivery Disaster. Item was used in the filming of an unreleased western in 1968 on the Italian island of Sardinia. Casting was killed during an on-set accident. Comic production team believed that Blessed Pictures bought the camera when equipment from the shoot was sold out. Action Max क्या? Sir is literally out of control today. Movie camera procedures. The item should be isolated from any person or event that is objectively interesting, since its effect is activated by the presence of dramatic incidents. The movie camera used to make commercial feature films. Internal mechanisms are remarkable. Subjects near the item will often experience a torqued version of reality resembling the heightened drama and action of a movie. Whether these events are localized, alternate realities, or products of hallucination is currently unknown. Additionally, the item seems to record footage of from these incidents and creates VHS copies, edited in the style of short films. During their investigation, agents learned that a podcast titled Brian's Movie Den had reviewed the item-generated movie Delivery Disaster. The podcast creator Brian Hennerman was taken in for questioning. The staff of Movie Night store Mr. Hennerman rented the film from were also questioned. Who knows that? क्या सोच सोच के बनाया इन्होंने, मतलब the level of creativity hats off, and उतना appreciation भी नहीं मिला। ये होता मतलब dedication towards gaming। उतनी तारीफ, उतनी मतलब शाबाशी उनको मिली ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा कम कर सकते हैं कुछ कुछ मामलों में, जैसे ये रीडिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो पढ़ लिया। इससे चलते हैं।
फाइनली आई थिंक यही है अपना ट्रांजिट एक्सेस। क्या हेल्थ कम कर दिया है यार इसने, इतना कौन हेल्थ कम करता है। For immediate publication, I learned a brand new language. The fish taught me. You probably don't believe me, so I will prove it. See, please publish this letter, and maybe other fish speakers will get in touch. They will be able to read my address and get it. Gemini Rob Larry Humbert. हेल्थ अच्छा हाँ हाँ समझ गया। यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है ना, यहाँ से चलेगा। हेलो इतनी रात में भी। यस हाँ, एक और मिशन फाइनल इसका बाकी है, तो ये कंप्लीट करके यूजुअली मेरे सैटरडे संडे को मेरे को सुबह लेक्चर्स रहते हैं, बट कल नहीं है, परसों है, परसों डबल लेक्चर्स देने, तो आज खत्म कर रहा हूँ इसको। मतलब पूरा नहीं खत्म होगा, एक और मिशन, एक पूरा डीएलसी बाकी रहेगा, वो कल कंप्लीट करूँगा, फिर हम लोग एपेक्स कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे वेलकम टू स्ट्रीम। तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को? सोने वाले हो क्या, या फिर जागने का कुछ प्लान है? एनीवे वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। कैसे हो? इसको आगे बढ़ाते हैं। Time and out of options. I took all the C4 I could get my hands on and strapped it to the nail. Boom. A desperate move, but it's better off in pieces than in enemy hands. Trench wouldn't be thrilled. He always said how vital the nail was, how it was the Bureau's duty to protect it. Bullshit. Those years spent in the director's chair warped his priorities. In the end, he valued order over people, the advice of invisible voices over that of old friends. He lost sight of who he was. The board made sure of that. But I did my duty. अभी तो जागूंगा लाइक 4 बजे तक मैं बस। तो भैया आप कैसे हो? मैं रिकवर हो रहा हूँ, मेरी सर्दी वगैरह हुई थी, सर्दी फीवर वगैरह। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ी पूजा वगैरह थी, तो उसके लिए भागा दौड़ी हुई, तो अभी रिकवर कर रहा हूँ जितना हो सके। अभी मेरा ये फाइनल वाला मिशन हो जाएगा तो फिर सो जाऊंगा इसके बाद। What the hell was she thinking?
ये यहाँ अभी फाइट होने वाला है, पूरा लाल लाल लग रहा है मेरे को। All right, this is the last one. फाइनल फाइट होगा शायद यहाँ पे। I can't believe Marshall's brilliant plan was to blow up the nail. And she thought I सही। wasn't ready. 4 बजे तक क्या करने वाले हो? तोड़ दो भाई, तोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। फाइनल मिशन कंप्लीट। There, easy as pie. Fuck, but that's the last one. I fixed अब क्या हो गया? Nail leave end. अब क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, मेरे को पता ही था। अब कहाँ से जाऊँ? अच्छा यहाँ पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करूँगा, पढ़ाई। अच्छा अच्छा। not worse. Emily will know. I hope. हो गए। आई थिंक हमारा काम खत्म हो चुका है। मिशन एक बार देख लेते हैं, मिशंस में क्या बाकी है। हाँ, एक ही बाकी है, न्यू मिशन द पिरामिड। अभी भी बाकी है। तो पिरामिड क्या बोल रहा है? Speak to Pope. Upon completing the final ritual, the astral plane begins to collapse. The board is not answering and Jesse is trapped. A crystal appears, creating a bridge that... ये तो हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करो करो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहते हैं? क्या क्या तुम्हारे टॉपिक्स है? तो फॉर्मर बात कर रहा है, बोर्ड बात कर रहा है। अपॉलॉजीज, हाउ एम्बैरेसिंग। एस्ट्रल फेलो शेड्स आर एक्टिंग हॉस्टाइल, वेरी रूड। वी कैन नॉट डायरेक्ट बिहेवियर इन एक्सटर्नल नॉट एस्ट्रल रीजन्स। प्रॉमिस, फिंगर्स क्रॉस्ड। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा। Oh, hello, Director. अब देखते हैं क्या बोलती है एमिली। What did you do? What is causing these tremors? I thought you could tell me. I completed the 4 rituals just like the board told me to. The astral bleed should have stopped. Look, it has stopped. The nail is repaired. But we have a new problem. My analysis of the nail indicates that it is literally a piece of the astral plane. Or possibly a vessel containing the astral plane. Or both. Either way, right like now, full both wave dimensions rectifiers, are buck vibrating boost at converters, completely etc. incompatible Okay. frequencies. The spatial friction they are generating is incalculable. It's going to destroy both planes. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने उतना नहीं पढ़ा था, शायद बेसिक लेवल का थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। Right to destroy the nail. I should have left it in pieces. No, then the astral plane would still be leaking in. Sometimes there's no right answer, Jesse. We need more information. No. I need to fix this now.
I'll figure something out. No, we should really make a plan. The tremors are originating from directly below us, but we don't know what... Perfect. I'll head down and take care of whatever's going on. Just do what you can from here. Jesse, you can't just... I have to, Emily. I'm the director. This is on me. अब हमें नीचे जाना पड़ेगा. If you're not going to listen to me, then you better go figure out how to stop this. There's no telling what could happen if the vibrations escalate. Bug boost converters. ये हम लोग ने जान लिया. Information हमें पता है. Reach the bottom of the nail. Take notes. सीधा नीचे जाना है. ऐसे ही. I hope I know what I'm doing. अच्छा हाँ चलो लाइट आ गया. That was just the top of the nail? How much deeper does the foundation go? Entry day plus 118. I have changed, though it's hard to know how or why. I no longer need tools to detect the house's veins, to hear it breathe. I can feel its blood. Guys जो भी देख रहे हो ना फटाफट से लाइक कर देना स्ट्रीम को. I have added my own illustrations to the walls. यहाँ पे कुछ illustration किया है. Some mystery that the oldest house whispers to me. I have to avoid the it as I do so. They haunt me. I don't blame them. They're just following the pillar's orders. Even poor Adam doesn't seem to recognize me anymore. I've spent a long time contemplating the etchings of the tree and its roots. Did you know this city used to be a forest? क्या बात कर रहे हो? I wonder if our oldest house wore a different face back then. Or if it was always here. A 21st century office building since time immemorial. Done! अरे क्या बात है? A place to know the future. Can it change its skin? Can it wander? ये अगर मूविंग में दे देते तो सुनते सुनते आगे भी बढ़ जाता. Not mine. But here, in this sacred place. जल्दी बोल भाई कल सुबह पनवेल जाना है. खत्म. हाँ चलो आगे बढ़ना है. इतने दिन में सुनते सुनते आगे अगर बढ़ सकता ना तो वो और बेटर रहता. अच्छा ये अनमैप्ड एरिया दे दिया. क्यों डरा रहे हो भैया? The crystals are growing like crazy there. It's almost like they're trying to stop me. Astral spike. I tried to get out after the detonation, but the astral spike came out of nowhere. I escaped, but my HRA was damaged. I'd bet a year's salary the board sent it. We never did see eye to eye. They have too much control over Trench, the Bureau, the House. They make themselves part of every important process. Nothing a little C4 can't fix. Two birds. अच्छा इसने ही फिर बोर्ड को मारने की कोशिश किया क्या? खुद भी मर गई. I did it. If Faden did her part, then the Bureau is safe. Until the next thing. Jesse has good reason to hate the Bureau. But that could be what we need right now. She won't follow the same path. Won't fall into the same traps. She'll lead her way. So, Director Faden, here's my last lesson. You can't save everybody. Entry day plus 118. HRA was damaged. The board said it. When Marshall blew up the nail, the board attacked her. I don't fucking like it.
चलो ज़्यादा डैमेज तो नहीं दे रहे ये लोग। चलो इधर एक कंट्रोल पॉइंट दे दिया इन्होंने, ये एक अच्छी बात दे दी। अभी अंदर बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है ऐसा लग रहा है। हाँ रेंजर, मतलब तगड़ा फाइट होने वाला है। आसपास में से रेंजर वाला रख दिया, मतलब तगड़ा फाइट। ये जानते नहीं मेन कैरेक्टर अभी मार्शियन मैनहंटर बन चुका है। I've decided to rejoin the Bureau in the upper levels to end my long absence spent in the Foundation. Northmore will be angry at me for disobeying him. That's just his way. But I don't care. I need to remain in the oldest house to help however I can. I doubt I can steer the Bureau back on the right course. ये बोल रहे हैं मतलब बोर्ड भी कुछ झोल वाला सीन है उसका। मार्शल का तो वैसे ही पंगा हो गया बोर्ड के साथ। ये भी नहीं चाहता था बोर्ड घुसे सब चीज में, वो भी वायरस जैसा बोल रहा है। डीसी का भी मार्शियन को अपने फुल पोटेंशियल यूज करेगा भी या नहीं लाइव एक्शन, मुश्किल है। लाइव एक्शन में वो जो तुमने एलन विक 2 में एक जो इंटरव्यूअर रहते ना डेविड हेयरवुड करके, एक ब्लैक कैरेक्टर जो है, उसने टीवी में मार्शियन मैनहंटर का किया था, जॉन जोन्स। ये पक्का मार्शल रहेगी, पक्का बोला ना। Marshall? You're alive. Soon you will no longer recognize us, or yourself, or him, or her, or them. Family is dead. The walls are broken, but yellow and red in the eye. God damn it. Inverted is made right. Either it is. Fuckers take everything. I am not letting you take this. You've always been the new you. You want this to be true. इधर ही है। ये मेरे को हेल्प कर। मुश्किल भाई, ये अभी तक सुपरमैन, बैटमैन और इसमें ही तो फंसे हुए हैं ना, उसको ही कैसे सही से दिखा पाए। हर टाइम तो नेल नहीं कर पाते वो लोग, सुपरमैन को कहीं सही नहीं करते, या बैटमैन को सही से नहीं करते, या वंडर वुमन का कुछ पंगा हो जाता है। हाँ चलो
मार्शल काफी हद तक उसका डैमेज हुआ है। अच्छा मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ। अरे कौन किधर है क्या कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। किधर है मार्शल किधर है? Why the board wasn't answering what's causing the quakes. She came down here to stop this. I should have been with her. I could have saved her, but I can still save everyone else. Finally khatam. We are cleansed, liberated. Hallelujah. The foundation is stable, beaten, A-OK. We hope you will improve your attitude, loyalty. Well, fuck you too. Oh, I'll be sure to. Let's play it smart. They don't need to know I'm onto them. Not yet, anyway. So I think इसी के साथ खत्म हो जाएगा अपना अनमैप्ड एरिया। अरे अनमैप्ड तो ठीक है, बट मैंने कहाँ से सेव किया था? फास्ट ट्रैवल वाला पॉइंट दिखा दो बस। यहाँ ही गया होगा। अरे नहीं, ये भी नहीं। फालतू का हेल्थ भी गया। वैसे हेल्थ यहाँ से तो मिल जाएगा।
गया चलो वहां से आवाज आ तो रही थी फॉर्मर था वहां पे The nail is secure. The hiss can't touch it. I can't undo the astral bleeding in the foundation, but at least it's stopped. Along with the seismic activity. You did it, Jesse. Did you ever find Marshall? I did. She's gone. She died thinking she'd save the Bureau. Not a bad way to go. I wasn't ready for this crisis. I didn't even see it coming. जीजी's लोल खुशी I'll be ready for the next one. I mean, what good is a director who can't hold her bureau together? कल फाइनल एक DLC रहेगा एलन वेक के साथ कनेक्शन वाला जिसमें एलन वेक क्यों जुड़ा है क्या जुड़ा है सब तो नहीं पता चलेगा थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाएंगी द फाउंडेशन मेन स्टोरी खत्म हो चुका है DLC पहला DLC खत्म हो चुका है सेकंड DLC बाकी है कल एलन वेक वाला मेरे को लगता है 1 घंटे में होगा पहले लगा था 1 घंटे में हो जाएगा जिस हिसाब से पहले स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था फिर वो एडिशनल मिशंस भी ऐड करे जा रहे थे I know how to handle things now that I'm the director. Clearly, it's not that simple. I need to choose a director. But game design, level designs, should be one that serves narratives बहुत बढ़िया. Not the boards. Whatever those are. I need to lead my way. Actually एक गेम के ही 3-4 भाग बन जाते हैं जिस लेवल का इन्होंने स्टोरी पैक किया हुआ है और मेन स्टोरी से ज़्यादा इनके साइड मिशंस बहुत उन्होंने इंटरेस्टिंग बना के और भी रखे हुए हैं क्या है कुछ हाँ हो गया ना खत्म हो गया ये क्या थक गया ये ऐसे चमक क्यों रहे हैं If it isn't my favorite director. इससे फाइनल Now बात that कर लेते this हैं nail business is handled, I should probably be getting back to executive. But maybe I'll keep poking around. Just for a little bit. गेम कंप्लीट मेन गेम कंप्लीट हो चुका है DLC अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट 2-3 ये डायलॉग्स वगैरह बाकी है Bangalore in parallel universe doesn't have any double timing and lost a 1v1 from Jesse Pinkman. Bangalore in parallel universe. But थोड़ी aged Bangalore है ना मार्शल थोड़ी aged है काफी पहले से है इसमें doesn't have डबल टाइमिंग बट डबल टाइमिंग की जरूरत नहीं है वो काइंड ऑफ टेलीपोर्ट ही कर रही थी एक जगह से दूसरे जगह पे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन था जहाँ पे ऐसा ब्रिज बनता है उसको तोड़ दोगे तो नीचे गिर जाता है नॉर्मली कोई भी दूसरा एनिमी रहता तो वन टाइम में वो गिर जाता है खत्म ये तो वापस आ रही थी वहां से टेलीपोर्ट हो गया लॉस्ट 1v1 फ्रॉम जेसी पिंक Has the nail been doing anything since we restored it? Define anything. Anything unusual? Define unusual. Emily, sorry, but the answer is a whopping yes. Now that it's whole, the nail is emitting a constant field of, well, think of it like low-level radiation. It seems to suppress any biological matter it encounters. This explains why nothing grows here and why the Bureau had to abandon the area. Prolonged exposure would certainly begin affecting neural processes. Wait. Was the field created when I cleansed the nail? I considered that, but the nail's readings are quite different from the ones I recorded at the cleanse control points. I think the nail's field is purely of its own making. In fact, I think it would passively prevent any his corruption, like the HRAs do. Which makes me wonder what actually occurred when you cleansed the nail. I've been wondering about that myself. Did the board let the hiss corrupt the nail? Did they want me to cleanse it? If so,
Why? What do you know about Director Northmore? Well, he was Director Trench's predecessor, and Northmore's famous for being the first board-appointed director. See, before we found the oldest house, directors were picked by committees of old men in suits, drinking cognac and smoking cigars or whatever. You know, standard, uninteresting methods. I think the word you're looking for is bureaucratic. Or antiquated. Regardless, Northmore was eventually forced to... Well, we don't need to go into that. Strangely, the only two board-appointed directors left the position under unusual circumstances. If the Trench का तो पता board चला. director, then how did they retire them? I doubt they go out and buy you a gold watch. Sorry, Jesse, I didn't mean to imply that... Don't worry. If anyone's getting shown the door, it's them. चलो फॉर्मर लास्ट में वो छुप गया था वहाँ पे. What do you know about an entity named Former? I can't say I've heard of it. You got any details for me? Well, imagine a one-eyed bug thing. I think it was a part of the board, but then something happened and now it's separate. Interesting. See, I always wondered if the board was some sort of entity or a group or conglomerate of linked consciousnesses, but this supports the group theory. Although I could have undergone some sort of corporeal exile. Too many unknowns to form a working hypothesis yet, but I can prioritize this matter in future astral dives if you think it's important. Fortune favors the prepared. Do it. I'm gonna keep looking around. I wish I could go with you, but I still need 30 hours of training before I can do field work. We'll work on that. चलो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. Don't be a stranger. एबिलिटीज इसको अनलॉक कर लेता हूँ. मल्टी लॉन्च काम कैसे करेगा? अच्छा राइट क्लिक करके. अच्छा अरे बाप रे. Director Faden. हाँ क्या हुआ बोलो? कुछ नहीं ऐसे ही टाइम पास. डायरेक्टर फेडन. एबिलिटीज मीली वैसे भी कुछ काम का नहीं है. सीजिंग का थोड़ा भैया एक चाहिए था, इसके लिए 3 पॉइंट्स. बाकी ये ग्राउंड स्लैम वगैरह भी उतना काम में नहीं आता क्योंकि पिटाई हो जाती है. एंड फास्ट ट्रैवल करके मैं सेंट्रल इसमें चला जाता हूँ. फिर कल हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सिंपैथाइजर का ट्रेलर देखो. ठीक है चलो अभी देखता हूँ. बहुत सारे नए ट्रेलर वगैरह आए हैं एकदम अचानक से. डायरेक्टर या इसमें हमें जाना है इन्वेस्टिगेशन सेक्टर में. वहाँ से हमारा शुरू होगा. ये एलन वेक ने स्क्रिप्ट में लिख के दिया, मतलब टाइपराइटर से वो टाइप वही कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन सेक्टर है. इसको कुछ नया पता है क्या? Clean out every... Man, I never thought I'd be working in the executive sector. Look at me now, Ma. I'll see you later. हो गया खत्म. आज के लिए खत्म नहीं, आज के लिए शुरू, क्योंकि आज ही हम लोग खत्म भी करेंगे. 12 बज गए ऑलरेडी. सो सिंपैथाइजर का ट्रेलर ठीक है. बीच में एक ये इसका आया था, कौन है वो? बिली समथिंग क्या, स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 जो है, बिली जॉन नहीं, क्या नाम है उसका? बिली बॉबी ब्राउन ऐसा कुछ नाम है. मिली बॉबी ब्राउन ना, मिली बॉबी ब्राउन. डैमसेल करके एक उसका ट्रेलर आया, इंटरेस्टिंग लगा. 10 months ago वाला देखना. 10 months ago वाला ओके. मुझे लगा अभी रिलीज हुआ है, मतलब
अब भी उन्होंने ये किया है, रिलीज किया ट्रेलर। यूट्यूब अगेन वॉलेंडोर सिंपथाइजर्स। वन डे अगो आया है, 10 मंथ्स अगो आया है। ठीक है, 10 मंथ्स अगो वाला देख लेते हैं। HBO ओरिजिनल लिमिटेड सीरीज। क्या बात कर रहे हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऐसा उसका मेकअप करवाया? पाक चैन बुक। कमिंग इन 2024। सही लग रहा है ये। इंटरेस्टिंग लग तो रहा है। RDJ got so many supposedly roles, he automatically became an executive producer. ट्रेलर 2, अरे बाप रे, इसमें तो और ज्यादा बुड्ढा लग रहा है। एक दिन पहले का ऑफिशियल टीजर। अच्छा, वो भी टीजर था, ये भी टीजर। 2 मिनट का ये टीजर तो नहीं है, तो ट्रेलर ही है। अच्छा खासा तो दिखा दिया इन्होंने। चलो आज इधर ही खत्म करते हैं। मार्च को आ रहा है 14th को। ओके, अभी भी है, पर फर्स्ट ट्रेलर ज्यादा सही है। ओके ओके। सैमसंग का भी आ रहा है ट्रेलर, नेटफ्लिक्स। प्रॉन 3 भी आ रहा है क्या? द पेंगुइन, अरे पेंगुइन भी आ रहा है। पेंगुइन, पेंगुइन भी 10 महीने पुराना, क्या बात कर रहा हूँ। इन प्रोडक्शन टीजर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर ध्यान दिया होगा यार, याद नहीं आ रहा। अभी बहुत आते रहेंगे, अभी रात हो गई, ऑलमोस्ट 1 बज गए। सुबह मिलते हैं। तो सुबह देखता हूँ कुछ। सुबह मेरे को टेंशन नहीं, आराम से सो के उठ सकता हूँ। आह, चलो देन। शक्तिमान के कास्ट में रणवीर सिंह, क्या फाइनलाइज हो गया? कितने सालों से चल रहा है शक्तिमान करने वाले हैं, शक्तिमान। शक्तिमान कास्ट, अरे हाँ, फैंटास्टिक 4 का ये देखा क्या? कास्टिंग हो गया? हाँ दिखा रहा है ये कुछ। शक्तिमान रणवीर सिंह।
शक्तिमान बन मुकेश खन्ना को टक्कर देंगे रणवीर सिंह 2025 में शूटिंग शुरू जानिए बजट से लेकर ये कब आमने सामने होंगे शक्तिमान एंड और तमराज किल्विश 15 घंटे पहले एक दिन पहले ये तो मेरे लिए लेटेस्ट न्यूज है 15 घंटे पहले हाँ पेड्रो पास्कल को सब में बहुत जनों ने कमेंट किया कि ओवरकास्ट कर दे उसको मैंडलोरियन में भी वही है लास्ट ऑफ अस का लीड भी वही है फिर और भी कुछ कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट रोल्स उसने किए ये फैंटास्टिक फोर में भी वही है और काफी पहले से चल रहा था एक जॉन कर्जिंस्की जिसको तो दिखा दिया था उन्होंने और मार भी दिया था अ, अ, फिर पेड्रो पास्कल को लेके आ गए और वो स्ट्रेंजर थिंग्स का बंदा वो भी है जिसने वो गिटार वाला सेगमेंट किया था डीमंस वीमंस आ रहे थे और गिटार बजा रहा है मेटालिका का आई थिंक एंटर सैंडमैन बजा था वो बहुत बहुत सही सीक्वेंस तो मेटालिका ने खुद रीट्वीट भी किया था शेयर भी किया था फिर बेन वो बंदा भी किया है साइड विलन और साइड रोल्स वगैरह किए उसने और वेनेसा कर भी ये मिशन इम्पॉसिबल लेटेस्ट वाला देखा तो उसमें थी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली सूजन स्टॉर्म देखते हैं अभी उसका स्टोरी क्या रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा कास्टिंग वगैरह तो मेरे को डिसेंट लगा कास्टिंग में उतना मेरे को नहीं लगता कि इशू होगा बट स्टोरी कैसा रहने वाला है कैसे उसको आगे लेके जाएंगे क्योंकि फैंटास्टिक फोर का एक भी मूवी ढंग से चला नहीं पहले दो तो फिर भी ठीक ठाक थे क्योंकि तब भी उतना चलता नहीं था सुपर हीरो मूवीज तो उसमें वो कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस वो बना था जॉनी तब तो फिर भी मतलब उतना आइडिया नहीं था तो देख लिया था वो उसमें ही मजे आ गए थे नया वाला फैंटास्टिक फोर बहुत बकवास था बहुत बकवास वो 15-20 मिनट में मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा बहुत बकवास स्टोरी बहुत बेकार उसका जो भी उसको वो लोग दिखाना चाह रहे थे एक्शन और जो एंड का फाइट वाला सीक्वेंस होगा बकवास चलो डेडपूल बेबी भरोसा नहीं नहीं डेडपूल होगा डेडपूल सही होने वाला है डेडपूल मजा आएगा डेडपूल का दिक्कत नहीं है पहले डॉन 3 होगा उसके बाद ओके ओके हाँ डॉन 3 भी तो आने वाला था डॉन 3 का तो कब का उसने वो पोस्टर रिवील या क्या कुछ तो किया था टीजर टीजर ही आई थिंक आया था डॉन 3 होगा उसके बाद चलो फाइनल वाला बाय गुड नाइट सी यू टुमारो टेक केयर बाय बाय